Today, the Institution of Engineers, Bhilai Local Center is organizing the webinar on the role of chemical engineering in modern society under the aegis of Chemical Engineering Division Board of Institution of Engineers. There is all-round euphoria celebrating the dawn of this new millennium. However, we have to be extremely careful in planning new strategies to manage the complex and sometimes contradictory demands of the society. The economic, environmental, and strategic spectrum of the world today is admittedly governed by the developments in science and technology. Chemical engineering branch has contributed to advances in healthcare, pharmaceutical technology for medicines, manufacturing of chemicals, and processing systems for more efficient waste disposal management. This has improved our standard of living and quality of life. We have started realizing that the rapid pace of the industrialization and its impact on the population is boomerang on us. Unless we take adequate measures to ensure that the generated pollutants are effectively treated and the effluents let out are harmless. Environmental issues have become predominantly vital, and not only engineers but society in general has become quite concerned about this. The challenge today is to demonstrate that chemical industries can flourish without rendering the environment unsafe for vegetation, animal, and human species. Developing new sources of fuel such as hydrogen cells, biorefineries, etc. will contribute to clean environment. Now in present scenario, large-scale efficient manufacture of ethanol as replacement of petrol and diesel will also reduce our import of crude oil. Hydrogen usage in vehicles will play a vital role in our economy. The developments will also contribute to reduction of pollution. The emphasis is on controlling the pollution, whereas time has come when we should think in terms of prevention. Prevention is possible only through developments of better process technology. Chemical engineers are concerned with all basic parameters which are essential for sustaining life rather than quality of life. Our eminent speakers, Sri Suresh Chandra Gupta ji, Dr. Shweta Chaube, and Dr. Saji Chako will throw more light on the subject. Sri S.C. Gupta has given consent to speak on the subject and spare his valuable time. He is graduated from IIT Kanpur in 1974 in chemical engineering. He has done Master in Management from Pune University. At present, he is Vice President of Bharat Rasayan Limited, Bharuch, Gujarat. I welcome you, sir. I also welcome Madam Dr. Shweta Chaube, another eminent speaker of the today's subject. She has spared her valuable time for Institution of Engineers. She is Professor and HOD in Government Engineering College, Raipur of Applied Chemistry. Now about Dr. Saji Chako, another eminent speaker of the subject. Dr. Chako is Professor and HOD of Electric Department in Government Polytechnic College, Durg. He is also member of our executive committee. I also welcome you, sir. Sir, we are thankful to you that you have given consent at 11th hour, but I think till now he has not joined us. The earlier speakers, B.L. Agrawal and moderators, B.P. Yadav, are not joining the webinar due to their personal unavoidable reasons. Dr. Nagendra Tripathi, Honorary Secretary of Bhilai Local Center and Professor of Bhilai Institute of Technology, Durg, will be the moderator of today's webinar. I also welcome him. Thank you, I sir. welcome Dr. Achut Thackeray, President of Institution of Engineers India, to grace the occasion. He has spared his valuable time for us. I also welcome Professor Madam Dr. Shilpa Tripathi, Chairman, Chemical Engineering Division Board of Institution of Engineers. I also welcome Dr. G. Ranganath,
Chairman, Committee for Advancement of Technology and Engineering at IEI. Both are the eminent personality of IEI. I think Dr. Ranganath is also not joined till now. I also welcome all our esteemed guests, members of Institution of Engineers with their families and families of Bhilai and various centers of India. It is my sincere request to those who have not registered to take opportunity to hear the valuable talk on role of chemical engineering in modern society. Please register immediately. All participants will get certificate also. Once again, I welcome you all. Welcome. Thank you. Thank you, sir, for your wonderful address and thoughtful view on role of chemical engineering on modern society. Now, I request Chairman, Chemical Engineering Division, Professor Dr. Shilpa Tripathi, to please address the audience. Thank you, sir. Dr. P.K. Tiwari, the Chairman of Bhilai Local Center, Dr. Tripathi, Honorary Secretary, our panelist, Engineer Gupta, Dr. Shweta Chaube, and all the dignitaries and dear fellow members. A very warm good morning. First of all, I would like to thank you, this Bhilai Local Center, for giving me this opportunity. And believe me, this is a very nostalgic moment for me, because I belong to Raipur and my born brought up is basically from the Chhattisgarh. So I still remember the Raipur and the Bhilai when I was studying in now NIT GCNIT Raipur. So just I would like to share a few things. Like when I got admitted, उस समय पर PET होता था, आप शायद आप में से जानते होंगे कुछ लोग. So yes, madam. मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला. फर्स्ट ईयर तो कॉमन था सबके लिए. देन सेकेंड ईयर वी नीड टू चूज दिस ब्रांच. सो मैंने सबसे पहले देखा कि सबसे जल्दी जॉब किस में लगता है, बिकॉज बीइंग द एल्डेस्ट चाइल्ड इन माय फैमिली, मुझे थोड़ा सा जल्दी था कि मैं कब जल्दी सेटल हूँ एंड सपोर्ट करूँ फैमिली को. सो मैंने सिर्फ इस चीज को लेते हुए कि सबसे जल्दी इसमें प्लेसमेंट्स होते हैं, इस ब्रांच को लेना है. सो इस तरह से मैंने इन स्पाइट ऑफ गुड मार्क्स मैंने केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट किया. सो और सच में ये हुआ भी. हमारी बैच में अराउंड 40 स्टूडेंट्स वर देयर एंड I think 39 students got placed at that time in good industries like और इसका शायद पूरा क्रेडिट हम भिलाई स्टील प्लांट और उसकी बहुत सारी जो इंसिलरीज थी उनको देना चाहिए. Which year? 93 सर, 1993 में पास किया था मैं. तो मैं सर हम रायपुर भिलाई अप डाउन करते थे क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट में हमारी ट्रेनिंग होती थी. सो उस समय ही मुझे समझ में आ गया था, मतलब मेरा चॉइस जो है इट इज रियली, मतलब मैंने बहुत अच्छा चूज किया ब्रांच को और इमीडिएटली पास होते से ही आई गॉट प्लेस्ड एंड काफी अच्छा सब मेरी जर्नी अभी तक की रही. सो इफ आई टॉक अबाउट केमिकल इंजीनियरिंग इन द मॉडर्न एरा, मैं बताऊंगी सर कि IEEE की जर्नल में इट इज द सेकेंड मोस्ट demanding branch in the world. So we should feel proud कि we belong to this branch which is the worldwide second most demanding branch, and it is associated with each and every walk of life. आप मॉर्निंग में से आप जो आपके हाथ में जो पहली चीज आती है से लेके till you sleep तब तक यदि if you count हर चीज में केमिकल इंजीनियरिंग. सो डेफिनेटली आज के समय में जब हम मॉडर्न एरा की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो इफ यू टॉक अबाउट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इफ यू टॉक अबाउट सेफ्टी, इफ यू टॉक अबाउट स्मार्ट सिटी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का स्वच्छ भारत अभियान,
sustainable practices. ये सब में chemical engineering chemical engineer play a very important role. With this, we also understand that this present age is the era of information technology. So nowadays, artificial intelligence, machine learning, IoT, Python, all are very much associated, are getting associated with the field of chemical engineering. And you all must be aware कि हम जैसे बात करते हैं CSIT, this is basically a service branch. And chemical engineering and जो भी core branches हैं, all those core branches, if they associate with this service branch, can play a miracle this thing. So आज जो हम बात कर रहे हैं कंपोजिट मटेरियल की बात कर रहे हैं हम, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायो साइंसेस, सो इन सब में भी केमिकल इंजीनियर का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। वर्ल्ड वाइड जो रिसर्च चल रहा है उसमें आई थिंक 80% जो कंट्रीब्यूशन है वो या तो केमिकल इंजीनियरिंग से है या केमिकल इंजीनियरिंग से एसोसिएटेड किसी फील्ड में है। सो नॉट ओनली इन दिस, हम नेशनल जो हमारी इकोनॉमी है उसमें भी केमिकल इंजीनियर कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट एंड इज कंट्रीब्यूटिंग, whether I talk about food industry, pesticides, pulp paper, और भी बहुत सारे fields हैं। With this, हम लोग being the member of this institution of engineers, as a chartered engineer, हमारे पास काफी opportunities हैं जिसमें हम सर्टिफिकेशन प्रोसेस में इवन वी कैन वर्क ऑन दी इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर में हम काम कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में है। सो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर एंड आई एम श्योर डॉक्टर श्वेता चौबे एंड इंजीनियर गुप्ता विल कवर ऑल दिस एस्पेक्ट्स। और जो हमारा यंग जनरेशन है जो कि अभी CSIT के पीछे लिटरली दे आर रनिंग बिहाइंड दिस IT इंडस्ट्रीज, और एक बड़ा फैसिनेटिंग और ये ब्रांच है। सो दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड एंड हम और अच्छी तरह से हम वी कैन कंट्रीब्यूट इन दिस सोसाइटी एंड वी कैन वर्क टुवर्ड्स दिस टेक्निकल फ्रेटर्निटी। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you, madam, very much for a thoughtful view on the scope and role of chemical engineering in our day-to-day life, industrial development. And it was honored to hear that you are also from the region Chhattisgarh. Madam, we welcome you again, because if we hear anybody from Chhattisgarh, it gives a double pleasure to everybody. Thank you, sir. You might see the same brightness in Tiwari sir's face. He even asked you, when did you graduated, because he has also graduated from there. Yes, And thank you, madam. Now, to begin with our session today, our first speaker is engineer Suresh Chand Gupta ji. He has graduated from IIT Kanpur in chemical engineering in year 1974. Then he obtained his Masters of Management Science from Pune University. He has a working experience of over 38 years. Presently, he is working in Bharat Rasayana Limited, Bharuch, as Vice President. Earlier, he has worked in Marksans Pharma Limited, Rubamin Limited, UPL, Deepak Nitrite Limited, Hindustan Antibiotic, and JK Synthetic Limiteds in various projects involving manufacturing and overall factory management. Now I would like to invite Gupta sir for his address. Please, sir. Sir, kindly unmute your microphone. गुप्ता जी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। सर दिख रहे हैं? दिखाई दे रहा हैं सर, हैं। Yes, sir. अच्छा। Please welcome, sir. Very good morning to all, and thank you this giving me chance to speak on the subject.
My subject is today the role of chemical engineering on modern life. Chemicals have been there since the beginning of our human life. Air, water are also chemicals, and they are very essential for our survival. Earth is having so many minerals, petroleum, crude oil. However, the way of living has drastically changed today than what it was earlier. Many of know that earlier mostly the wood and the metal was main material to be used in the furniture, in the house construction and day-to-day life. Even our cooking home, we were using wood and coal. Today the life is entirely different. With the advancement of chemical engineering, we have now going to achieve three major securities for the human life. डॉक्टर एन त्रिपाठी क्यों लग रहे हैं मुझे? The first one is food security by agrochemicals. The second one is energy security by various petroleum products. And the third one is energy security and pharma sector. We have got health security. In the food security by various agrochemicals, one minute. Share. Yes. Overview. So with the advancement we have received, and we are going to achieve it fully, three kind of basic securities. One is food security by agrochemicals, fertilizers and pesticides. Another is energy security. We have coal, petroleum for energy generation and for transportation. And third one is health security with pharmaceuticals and surgicals. Now food security, during 1950s, we were hardly producing 5 crore tons of agricultural items. Our population was hardly 36 crore. Today, population has grown more than 130 crore. So imagine the crisis if our food production would have not increased by then. Now today, we are producing more than 30 crore tons of agricultural items. The productivity has improved from 500 kg per hectare to 2500 kg per hectare by way of better utilization of the farming land. This has been possible only with use of fertilizers, agricultural chemicals like pesticides, insecticides, fungicides. Pesticide, insecticides and fungicides are very important for protection of crop, while the fertilizer is playing a vital role for the higher yield. Now herbicides have recently come under usage. It is also increasing the fertility of soil, and also it is removing the unwanted weeds around the desired crop. Now this has been possible only with the advancement of chemical engineering. In chemical engineering, we design better equipments which give economical production at high level. And also, we are becoming self-sufficient in food. Today, our nation is producing enough food even for export. We are able to export agrochemicals today comfortably. In the present view of Russia and Ukraine war, the world is looking at India for export of the farming products. And we are happy to do that for the service of the human society. Now, I remember in 1965, after the drought, there was a scarcity of food. We had to import wheat from USA under the scheme PL 470. And at that time, there was an Indo-Pak war. Sri Lal Bahadur Shastri Ji, the then Prime Minister, gave a slogan, Jai Jawan, Jai Kisan. Today, we are in a position, in a much better to export the farming product. He has given this slogan and requested the people to observe the fast on every Monday so that the food scarcity could be minimized. Now today the scenario is entirely different. With higher yield and with lower quantity of the farming land, we are self-sufficient for this food security.
Second is the water. The water resources are depleting day by day. The quality of water is also deteriorating. Now, with the advancement of this field of chemical engineering, we are able to recycle the water within the factory and also from city level. Now, energy security. Today we are able to generate enough electricity. 98% of the houses in India are connected with the power, electrification. This was not the case earlier. However, the coal is still remaining the major input for generation of energy, more than 80%, remaining 20% by other means. Slowly and slowly, we are moving from petrol, diesel, gasoline, CNG to ethanol and hydrogen. Hydrogen is the cleanest fuel. It will give only emissions of water vapor during transportation, because transportation emissions are the major hazard for the environment. Ethanol will give still lower emissions compared to diesel and gasoline and petrol. Petroleum products are derived from crude oil, which is available in the earth with exploration. However, today we are importing more than 90% of petroleum crude from abroad, which we are slowly coming down with our other means and developments. Emissions from the usage of diesel, gasoline, coal are creating problem for the environment as well as for our ozone layer. Now, health security. Pharmaceutical products are playing a major role for our health security. In India, we are the third largest producer of pharmaceuticals in Asia and sixth largest producer in world. More than 80% of the generic chemicals, which are quite cheap in cost, India is producing. India is also exporting branded and generic both chemicals to countries like USA, UK, European Union, Canada, and also Brazil. Now, many multinationals are looking at India for getting their pharmaceutical needs because of the lower cost, and they are registering us. Indian companies are able to register with full compliance of international codes like US FDA, European codes, etc. We are also producing life-saving drugs. Now, vaccines. India is the largest vaccine supplier in the world as on today. Antidotes are also produced in India for poison effect, animal bites, snake bite, cyanide poisoning, and we are keeping this in the manufacturing unit as an essential part. Surgical items are mostly made out of plastics. Now, this is giving us a big boost to pharma sector in India, and also we are earning the foreign earnings. With chemical engineering, our life has changed entirely than what it was earlier. We are today getting number of plastic items for our home appliances like furniture, bottles, containers, fiber sheets, appliances, electrical fittings, packaging items, FRP containers. Houses are made out of FRP sheets. FRP is nothing but fiber and plastic composite chemical. It is very sturdy and very usable and very durable. It does not catch any corrosion. Plastic body we are having for vehicles, home coolers. Now, there are we cannot think of any home appliances which are without plastic material. Earlier, the wood was, I told you, the major useful item, but now it is no more like that. In textile, nylon, polyester, acrylic, and terracotta. These are the synthetic fibers which are blended with cotton, or they are used as such. Earlier, we were having natural wool. Now we can have synthetic wool with acrylic. Polyester is also very major input for our textile. Synthetic wool is made in large quantity in India by polymerization of acrylonitrile. Polyester is using terephthalic acid as input. Nylon is using petroleum, major input for manufacturing of the polymerized nylon. Nylon is also used
for the tires, and it is giving a strength to tire with a nylon thread. Building an infrastructure, construction items participants सुन रहे हैं बस mostly used from the 29 cosmetics. लोग इसमें बाकी YouTube में पता नहीं 150 लोग Now we are having today construction items made from various chemicals like adhesives, paints, waterproofing chemicals. खाते वाले कटहल खाते Even plastic is used in the construction. हैं कहाँ से आएगा Now cosmetics and perfumes are also from chemicals. Processing foods and food preservatives, milk processing for dairy product, sugar production from sugar cane. There are a number of lists which can be shown here, but it is very difficult to think without chemicals nowadays. All these chemicals are derived from inorganic and organic chemicals. Organic chemicals are obtained from the crude oil with refinery and petrochemicals. सुरेश गुप्ता का पता नहीं कहाँ से लगा दिया And petrochemicals companies, major company in India is Reliance, as you know already. Today, our production of chemicals in India is more than $100 billion. शिल्पति पार्टी है जो केमिकल रीजन की Now, next one. पर आपने नहीं करनी पड़ी पूरी विलेज फंड के बाद नीट के विलेज में जब रिलेटिव लोग रहते हैं रायपुर से पास आउट Now, no doubt that the engineering has given us sustainable improvement and also मुझे अच्छा लगा need for development. पोस्टिंग पता नहीं ना कलर There is no doubt for better life, but we are affecting our environment and we are also affecting our safety and health. रायपुर से पास आउट है Now, रायपुर करने वाली मतलब बोली ना मुझे इतना अच्छा लगा the design of the equipment during design stage. सॉरी टू इंटरप्ट तिवारी सर, आपका माइक चालू है सर, उसको म्यूट कर दीजिए। अरे बस थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। During the design stage of any project, number of steps are taken. One is the assessment of the risk the project can carry. Number two is fail-proof systems for safety. Number three is preventive and corrective measures. Number four, safety interlocks to prevent any accident. And during design stage, not only the economical cost, but also the EHS factor is taken into account. If we fail to take care in design stage, then it is very difficult to make it reverse. Because the design, once the project is put in the place, it becomes irreversible for people to correct it totally. There can be partial correction, no doubt, but the entire correction cannot come. Now we are giving stress on preventive measures rather than corrective measures. Then safety interlocks are playing a vital role with networking of computer like DCS systems and sensors, alarms, field instruments, etc. In safety interlock, if one interlock fails, the other one will start automatically. For example, in a running reactor, if there is a failure of power, it will come automatically under standby power mode. If that also fails, it will come by itself to uninterrupted power supply. Because power failure can lead to a major accident during the reaction. Chemicals, molecules are very dangerous if they are diverted from their running conditions like temperature, pressure, composition. When the reactor stirring fails, there will be settlement of the chemicals at the bottom. We'll have certain chemical concentrations higher at the bottom, and certain chemicals will have much lower in concentration on the upper side of the reactor. Now, as we know from experiment, from lab experiment, pilot plant, which is already done before the project, that there could be a major accident if there is change in composition. So in running reactor, in running process of chemical, if there are any deviations in the composition, temperature, pressure, flow, etc., there could be a disaster. It depends on the chemicals which you are dealing with. So every molecule, every chemical has to be studied first with safety data sheet, with thermal studies, and also with deviations in the laboratory scale. After the laboratory scale, number of deviations are given deliberately, like change of pressure, change of temperature,
change of composition, power failure, and one by one corrective actions are taken so that the plant will not be unsafe at commercial scale. Once it is okay in the lab scale, the chemistry is also playing a vital role in this field. Once it is okay there, it is transferred to the pilot scale, which is a smaller plant. In a smaller plant, the equipment size is very small, so there the extent of the damage to the chemicals and extent of the unsafe conditions will be minimized. In pilot plant also, things are repeated with deviations, and it is seen that which factors are requiring preventive and corrective measures. Once it is okay, then chemical engineering is further looked into for their scale up. During scale up, the lot of design is coming into picture. How to design reactor, distillation column, filters, even the separators in such a way that conditions should not change much from pilot plant to the main scale. If conditions do deviate, not only we use the yield is affected, but also there could be a lot of unsafe conditions. One is also to consider the storage of chemicals. Certain chemicals on storage gets polymerized by itself. We know the case of LG Chemicals in Visakhapatnam. The styrene was stored for a long time during the lockdown period, and there was polymerization heat, and the storage tank got burst, and there was a lot of leakage all around the city area. Similarly, there have been cases of acrylonitrile storage because that also polymerizes during the temperature higher than room temperature in contact with air and over a period. If it polymerizes acrylonitrile, which is used for acrylic fiber in textile, then also there could be a major accident. And since acrylonitrile is made from cyanide group, it can immediately make a poison all around. If we were storing around 600 tons in one tank acrylonitrile in JK Synthetics for making acrylic fiber, there were two tanks, each of 600 ton, and we had given automatic firefighting system. As soon as temperature rises, chilled water cooling will start automatically. As soon as temperature increases, or first alarm of temperature is there, then everyone becomes alert. When the second alarm comes, the firefighting system will start automatically. The firefighting chemicals will enter the tank top and make a foam layer. So there will be a cooling effect as well as there will be a avoidance of the fire from the tank to the surrounding. If suppose the fire occurs there, the tank will get pressurized. Entire 1200 tons or 600 tons, whatever we store, will generate into the gas, and it could be a real disaster for the entire city. Now, in corrective measures, whenever we find any deviations which has been unforeseen during the design stage, because chemical engineering design has got certain limitations. Once they are the molecules, chemicals are the molecules. A lot of chemistry is coming into picture, and lot of change of the chemical nature is coming due to impurities inherent in chemicals. Suppose we go 100% pure chemical, it is very uneconomical at commercial level. Economy will play a part only when somewhere we balance it. Now, any impurity in the chemical can also create a havoc if it is not taken care of during design stage. Now, there are a lot of things in the safety in the industry. Industries are bound with the all safety laws. There has to be a data sheet study, safety data sheet. There has to be a HAZOP study. There has to be failure analysis. Everything is there, and people have been trained. People are supposed to be trained. The firefighting arrangement should work automatically. It is not that someone will come and will start firefighting. The water level should be sufficient for 4 hours. By the time the city fire tender comes, water should be sufficient storage, and it is connected with a pump which can deliver the high pressure foam and water to the entire factory area. It is always pressurized line. The pressure is noted all around the factory in pipelines till it is pressurized. As soon as there is a alarm, these systems will work automatically. Similarly, there is a snuffing system for the fire from CO2
And also we are having various other fire extinguishers which are made all out of chemicals. Now, communication system, PS system, everything is essential in chemical factory. And there has to be audit from the government agencies. There has to be audit from supplier side, from purchaser side, everywhere. Even the multinational companies come from time to time to see our safety systems, EHS systems, because they know that if there is some problem, the factory will close down and they will have problem of supply from us. So they have to monitor us 1 hour in advance, and they have to book order for the entire next year. Now it is not so easy to comply to international standards, but still the companies are supposed to comply, and they are coming again and again to see that the system is enforced. Now, effluent treatment is a vast area in chemical factory. Almost 30 to 40% area is effluent plant. There is different kind of effluents from the companies. Some are treated within the plant before sending to effluent treatment plant, and some are segregated in the effluent treatment plant. Segregation is the most important first in the effluent treatment plant. Then primary treatment, secondary treatment, I will not go into detail, bioreactor treatment, everything is carried out. Certain effluents which are very high in TDS and very high in the COD, they are taken care by initial treatment as well as multi-effect evaporators. Multi-effect evaporators are used for steam economy. So whatever we strip out solvent and whatever we strip out water is further treated in the ETB section. Solid disposal is also having controls from government side, and every factory is taking care of solid handling, solid storage. There are secured sites approved by the government in every city or in every between 1 in 3 or 4 cities, and they are approved by international standards, because it has to be impermeable layer on the ground so that there is no leaching on the ground from chemicals while we are storing. Highly hazardous solids are incinerated at high temperature, 1200 degrees centigrade, and emissions are also checked, that when they are heated or burnt at 1200 degrees centigrade, there are no harmful emissions. For the influence of gases, there are efficient scrubbers: primary scrubber, secondary scrubber, tertiary scrubber, and the main scrubber. The scrubbing media is selected according to the nature of the vent gases. Now there are compliance from GPCB, that is Gujarat Pollution Control Board, Central Pollution Board, and also from Explosive Department. Factory Act also applying for safety. Under the Factory Act Rule 68 in Gujarat, there are a number of rules and regulations which every company has to comply. Now, occupational health center is must in every company, which I have mentioned: vaccines, antidotes, primary healthcare, medicines, all are kept there with qualified nurse and qualified doctor. So round the clock, if there is any accident, the primary treatment is immediately given in consultation with doctor, and we have got tie up with various hospitals for emergency purpose. Now, about the safety, I would mention that I have seen in my during last 40 years a number of accidents, and those have been taken place in India. In Deepak Nitrite in Nandasari in 1995, a road tanker of ammonia fell down on the road during turning, and the ammonia liquid, which converted into ammonia gas, started leaking in the atmosphere. It was affecting the area up to 3 kilometers. We had to ask nearby companies to move the people in safe direction. In the gas wind flow direction is checked by every company in the morning, and every time there is a wind shock at the top of the building to see what is the wind direction at that time. Now people have to move away from the wind at perpendicular direction, not in the against the wind direction, because we don't know the source of leakage, first of all, unless until we are informed. So it is always safe to move to the perpendicular direction of the wind direction, and we had to ask all the companies, our own people, to move to safe place
And surprisingly, nobody came from government agencies for first 6 hours. Police came after 12 hours. They said that we don't have any means of safety. So how do we come and how do we come in the area? This is the case in India. So every company has to be self-sufficient with the systems like on-site emergency plan, off-site emergency plan. In the emergency mock drills, there are certain problems. Within the company, if you have mock drill for training purpose, people come to know it is a mock drill by movement of the people and all around. And if it is emergency, then people make panic. Hence, the number of mock drills are to be conducted for training purpose. It is not so easy. Even in the offsite emergency, which is done under the chairmanship of collector, district collector, we had found one difficulty in Halol in Gujarat. We conducted an offsite emergency plan named as a Pancham. Everything was published in newspaper. Okay, how people will move out, how school children will be diverted, how the traffic will be diverted, and we are going to make it only trial. It is not accident. It is only rehearsal. But even then, after making all arrangements, when the entire team came, chief site controller, as well as rescue team, first aid team, everybody came. They found that the entire village is closed. All houses are closed. Everybody has run away. There were rumors of the gas leakage. There was unnecessary fear, though everything was very clear in the newspapers. But somehow that failed at city level. Now it has been done in GIDC area, industrial area, in Dahej and other areas. Within the industrial area, it is possible because all industries know that this is a mock drill and we are going to conduct it. And there is participation of 10-15 industries in the industrial area, and it is conducted in Nandasari, in Dahej industrial area, in Gujarat, Ankleshwar, everywhere. But if you involve the city, it becomes a very difficult task. Now, state and central acts are also applicable. As I told you, Boiler Act, Poison Act for the like methanol. All insecticides and pesticides are under the category of poison. So whichever pharma production we are making, cypermethrin, permethrin, mancozeb, bifenthrin, everything is a poison, because these are used for killing the pest, insects in the crop, for crop protection. They have to be used in certain formulations, in certain concentrations. People should not accidentally take it. So government has imposed Poison Act. Methanol is also poison. Prohibition Act for alcohol, Boiler Act for safety of and boiler inspected. This is very detailed subject. Factory Act, state factory rules, GPCB, State Pollution Board, we have Gujarat Pollution Control Board, Central Pollution Board, MOEF. MOEF is controlling the project at project stage. The feasibility study, environmental impact study is presented to MOEF, and they go through the number of steps, and it is done by the approved consultant only. Regulations on storage and usage of solvents and acids. There have been misuse of solvents and acids in India. So government has imposed since 1993 this regulation. Every company has to declare storage and usage of solvents and acids, and they have to declare the stock, production, sales, purchase, everything. Now, CWC Chemical Weapons Convention. Over the period, it has been observed that some of the countries have used chemicals for the chemical weapons. Now, this is controlled by Chemical Weapons Convention, and there is a organization OPCW, and this is the Organization for Prevention of Chemical Weapons, headquarters in Netherlands. Every country rather has to be signatory to CWC. However, few countries have not yet signed, like Korea, South Sudan, etc. But most of the countries, almost 192 countries, have signed this convention, and they are complying it. Every company has to declare every year in the month of January
the production of chemicals which can be used directly or indirectly for chemical weapons. Such chemicals are defined in various schedules of CWC. There are three main schedules. Category 1 schedule is the most risky for the weapons. Next is schedule 2. Next is schedule 3. And then other chemicals, other organic chemicals, which I have not mentioned, of course, here, but there are 4 categories. Now, countries who have not signed yet, there is a strict watch on by multinationals, by other countries on them, because they may be still making chemical weapons. And many countries who have signed this treaty, they are also violating. There are very dangerous chemicals, as you know already. Hitler used phosgene gas during Second World War. Phosgene is made out of carbon monoxide and chlorine. Chlorine itself is dangerous. Carbon monoxide can suck your oxygen from the blood. There are many chemicals which I would not name here, and mainly there are 3 elements which are very dangerous, which are made chemicals: nitrogen, phosphorus, and sulfur. Whenever the molecule is having any one of these, or 2 of them, or 3 of them elements, the chemical nature has to be examined, whether it is very toxic, whether it can be very hazardous during processing, whether it can create any blast. Normally, nitrogen and phosphorus and sulfur, they also develop blast during the reaction. If the reaction conditions are slightly deviating, even water in case, suppose the water goes in the reactor, all these chemicals get heated up, and there is a violent reaction, and either there is a blast or explosion. When there is explosion, the pressure first goes up from normal pressure in the reactor. Once the pressure goes up, and of course we have got various safety for that. Rupture disk is there. The rupture disk will rupture first. It will go to knockdown tank. From knockdown tank, it will go to scrubber. But if suppose there is a large quantity of the material which is getting exploded, then rupture disk size will be insufficient. There is, of course, safety valve. There are interlocks. There are alarms: first alarm, second alarm, third alarm. In JK Synthetics, we were having 3 alarms in the Petri node dryer, which was coming from England. This dryer was used for the acrylic polymer drying. During first alarm, the operator used to be careful for temperature rise. They will control temperature. During second alarm, they may rather stop steam. After third alarm, there will be big blast, and there has been one. The company was closed for 6 months. I came to know later on. So this is the case in chemical industries. If things are not taken care for, now misuse of chemicals is also by other means food adulteration, attacking somebody in a bad intention. There's so many. It is very difficult to control because chemicals are there in the bulk quantity in the company. Suppose the acid is stored 300 tons. Out of that, if 1 kg is missed out somewhere, then how the government can control it? So there has to be a society awareness on chemicals. And with this, I will conclude. I will not go into detail of the subject matter because it's a vast subject. Of course, automation we have done in every industry, and automation with the interface with the operator is also being done by the DCS system. And there are very efficient sensors, efficient alarms. Everything is there. The worker is fully trained before putting on the operation, and there is a SOP for every step, and that SOP is not deviated. If he is deviating SOP, then immediately safety system is coming into place automatically. Automatic instrumentation panel has now changed a lot with DCS and with computerization. Thanks to everyone and giving me chance to speak on the subject. Thanks. Thank you very much, sir. Thank you, Gupta sir. Now, we would like to invite our second panelist, Dr. Shweta Chaubey, madam. Before she begin with her presentation, I would like to give a brief introduction about Dr. Shweta Chaubey. She is graduate from science graduate, and after completing her graduation, she did her
MSc in chemistry. Then she obtained her PhD degree. She has a working experience of over 22 years in various engineering colleges. She had over 51 publications in various international and national journals. She is actively involved in research, and her area of research interest areas are: she had worked for over 10 years in district Raipur and Durg in studying the effect of arsenic in groundwater and its effect on human health. Presently, she is working as a professor and head Department of Humanities, Government Engineering College, Raipur. Madam, now I request you to please begin your presentation. Thank you, sir. Thank you so much. Sir, you cannot share, you cannot start screen share while the other participant is sharing. So how could? Just madam, if Gupta sir will leave, exit from his sharing, then you can share your screen. Yes. He is doing. Yes, madam, now you can share. Sir, is it visible? Yes, madam. Yes, madam, it is visible. Thank you, sir. Thank you so much. Respected Engineer P.K. Tiwari, sir, Chairman, Bhilai Local Center. Professor Dr. Shilpa Tripathi, Chairman, Chemical Engineering Division Board, Institution of Engineers, India. Dr. H.O. Thakre, President, IEI. Dr. G. Ranganath, Chairman, Committee for the Advancement of Technology and Engineering, IEI. Dr. Nagin Tripathi, sir, Honorary Secretary, Bhilai Local Center, Institution of Engineers. Engineer Suresh Gupta, Chandragupta, sir, Vice President, Project Bharat Rasayan Limited, Buruj, and Dr. Saji Chako, Professor and Head, Polytechnic College, Raipur, Durg, and Engineer B.L. Agrawal, ex-GM Steel Sale, Set Ranchi, and and Engineer B.P. Yadav, GM Sale Refractory, BSP Bhilai, and all the dignitaries present over here and all the participants present over here. Good morning and namaste to all. आज का जो टॉपिक है हमारा है, दिस इज द टेक्निकल वेबिनार व्हिच इज बेस्ड ऑन द रोल ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग ऑन मॉडर्न सोसाइटी. ये पर्टिकुलर टॉपिक इतना वास्ट है कि एक केमिकल इंजीनियरिंग का मॉडर्न सोसाइटी पे क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहे हैं, ये बहुत वास्ट है. तो मैं इस पे जो चर्चा है वो कुछ टॉपिक्स पे जो है वो मैं चर्चा कर पाऊंगी, क्योंकि सारे टॉपिक्स को यदि हम लेंगे तो काफी समय भी लग जाएगा और पॉसिबल भी नहीं है कि हम सारे एरियाज को जो है वो कनेक्ट कर पाए. और अभी जो सर हैं, गुप्ता सर हैं, इन्होंने बहुत सारी चीजों पे बहुत ऑथेंटिक डेटा के साथ बहुत बढ़िया एक प्रेजेंटेशन दिया है, जिससे काफी कुछ चीजों पे उन्होंने जो है वो टच किया है और काफी नॉलेज जो है वो हमारा अपडेट हुआ है. और थैंक्स सर शेयरिंग फॉर सच अ वैल्यूएबल नॉलेज विद अस. सो व्हाट इज केमिकल इंजीनियरिंग? So chemical engineering is a certain type of engineering which deals with the study of operation and design of chemical plant as well as methods of improving production. Chemical engineers developed economical commercial processes to convert raw material into the useful product. The work of chemical engineers can range from the utilization of nanotechnology and nanomaterial in the laboratory
to large-scale industrial process that converts chemicals, raw materials, living cell, microorganism, and energy into the uses from the product. Chemical engineers are involved in many aspects of plant design and operation, including safety and hazard assessment, process design and analysis, modeling, control engineering, chemical reaction engineering, nuclear engineering, biological engineering, construction separation, specification and operation instructions, etc. So the chemical engineering के लिए हम बात करें तो chemical engineering एक multiple task engineering है, एक multidisciplinary engineering है, जिसमें कि physics, chemistry, biology, mathematics, economics, along with the other engineering, एक जो रॉ मटेरियल को लेकर के एक प्रोसेसिंग के थ्रू एक ऐसा वैल्यूएबल प्रोडक्ट फॉर्म करें जो एनवायरनमेंट के बेनिफिशियल हो एनवायरनमेंट के लिए और जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, ऐसा काम हो, ऐसा कंप्लीट एक जो तरीका है इसको हम केमिकल इंजीनियरिंग के फॉर्म में समझ सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग एक बहुत ही वास्ट ब्रांच है एक प्रकार से, इसमें सभी प्रकार की इंजीनियरिंग और बेसिक साइंसेस जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, लाइफ साइंसेस है, बायोलॉजी है, ये इन्वॉल्व है। सो ही इज द फादर ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग, जॉर्ज ई डेविस। ये केमिकल इंजीनियरिंग, हमने इनको फादर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग इसलिए कहा है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले देखा कि जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हो रही हैं, इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में जो प्रोसेस होती है, हर इंडस्ट्री का अपना एक अलग प्रोसेस होता है। इन्होंने ये पूरी प्रोसेस को ऑर्गेनाइज किया और ऑर्गेनाइज करके स्टैंडर्डाइज करके इन्होंने इसे लिखा। और जो फर्स्ट इनकी हैंडबुक है, हैंडबुक ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, इस हैंडबुक में इन्होंने सारी फाइंडिंग्स को इन्होंने समराइज किया और इसके बाद जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग को एक नई दिशा मिली और उसके हिसाब से उस स्टैंडर्ड बुक के अकॉर्डिंगली सारी इंडस्ट्रीज में जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग पे काम जो है वो स्टैंडर्ड वाइज और एक सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो स्टार्ट हुआ। इसलिए जो जॉर्ज ई डेविस हैं, इनको हम फादर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग कहा जाता है। यहाँ पर देखिए फिर से मैं वही कहूंगी कि जो केमिकल इंजीनियरिंग का जो रोल है मॉडर्न सोसाइटी में वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अलग अलग है, मगर हम बेसिकली 3 या 4 इंडस्ट्रीज पे फोकस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है कि रोल ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सर ने भी बताया कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, जिसमें कि आप यदि देखेंगे कि अर्ली हम इसका एक हिस्ट्री देखें तो अर्ली फैब्रिक जो था टेक्सटाइल में, ये इनिशियली जो था वो एक थ्रेड के फॉर्म में हम स्टार्ट करते थे, जहां पर नेट था। नेट जो है इट प्रोड्यूसेस फ्रॉम वन थ्रेड एंड एम्प्लॉइंग अ सिंगल रिपीटेड मूवमेंट एंड टू फॉर्म अ लूप्स। और इन लूप्स के थ्रू फिर जो है वो अलग अलग से फिर धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा अर्ली फैब्रिक में, उस पे हम पेंट करने लगे, उस पे हम प्रिंट करने लगे और देन वो जो ऑर्गेनिक कलर्स को यूज करते हुए हमने कलर कोटिंग किया और फिर धीरे धीरे विविंग का काम हमने स्टार्ट किया। और विविंग के काम के स्टार्टिंग के बाद फिर धीरे धीरे हमने जो है वो डिफरेंट कारपेट्स बनाना स्टार्ट किया या टेबस्ट्राइड्स बनाना स्टार्ट किया और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्टार्टिंग हुआ। और यहाँ पर फिर से स्टार्ट होने के बाद हमने कलर कॉम्बिनेशंस को डाइंग इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया। टेक्सटाइल के साथ डाइंग इंडस्ट्री मर्ज हुई और डाइंग इंडस्ट्री में भी डिफरेंट पार्ट में कौन सा कलर कॉम्बिनेशन यूज करना है, किस तरीके के डाई बनेगा, ये पूरा केमिकल इंजीनियरिंग का पार्ट था, केमिस्ट का काम था। ऑर्गेनिक डाइंग प्रिपरेशन के लिए लैबोरेटरीज होते थे और वहां पर जो केमिस्ट, ये जो आपके पर्टिकुलर साइंटिस्ट होते थे, केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती थी यहाँ पर। और ये केमिस्ट्री के थ्रू, केमिकल डाइंग के प्रोसेस के थ्रू जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने फिर एक नया मोड़ लिया और डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन में टेक्सटाइल जो है वो इन्वॉल्व होने लगे। देन इसके बाद जब हम मिडिल एज में आते हैं, मिडिल एरा पे यदि आते हैं, तो मिडिल एरा पे आप देखेंगे कि धीरे से जो है वो सिल्क का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया और 16th सेंचुरी के आते तक जो है वो फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, इंडिया में ये जो है वो सिल्क है, वेलवेट है, ये इंडस्ट्रीज जो है इन्होंने अपना जो है वो इम्प्रूवमेंट आया और सिल्क टेक्सटाइल आने लगा। और सिल्क के बाद धीरे से फिर और भी ज्यादा डेवलपमेंट आने लगा और 19th सेंचुरी तक जो है वो सारा का सारा इम्प्रूवमेंट हुआ कि टेक्सटाइल जो है वो पूरी मशीनरी पर बेस्ड हो गई और सारा का सारा जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है ये इम्प्रूव हो गया और मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फॉर्म में वो डेवलप हो गया। और ये मॉडर्न इंडस्ट्री के फॉर्म में डेवलप होने के बाद 20th सेंचुरी में और ऐसी चीजें आई कि पूरा का पूरा मॉडर्न सेंचुरी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था ये फुली ऑटोमेटिक हो गया और फुली जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम ऑफ मशीनरी पर बेस्ड हो गया।
इन पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे यदि हम देखेंगे तो जो भी टेक्सटाइल फॉर्म हुआ, यानी सिंपल कॉटन से लेकर के हम यदि एक पॉलिएस्टर तक चले आए, और जितने भी ब्रांड हैं, जितने भी नए नए प्रकार के टेक्सटाइल आए गए, जितने भी नए प्रकार के क्लोथ्स आ गए, फाइबर्स आ गए, ये कंप्लीट जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अलॉन्ग विद द केमिकल इंजीनियरिंग पॉसिबल हो पाया। यहाँ पर अभी भी आप देखिए, जो फ्यूचर में आप यदि देखेंगे कि 90s के बाद यदि हम, और फ्यूचर क्या हो सकता है इसका, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कंटिन्यूअस वर्क कर रही है अलॉन्ग विद द अनदर इंडस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग, तो देखिए आप यहाँ पर वुवन एक 9 मैंने ऐसे फैब्रिक्स निकाले हैं नेट से कि जो अलग टेक्नोलॉजी के साथ इस तरीके के फैब्रिक्स हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ चेंज कर पा रहे हैं क्लोथ को, जो हम वियर कर पाते हैं। हमने स्मार्टफोन्स देखे हैं, स्मार्ट वॉचेस देखी हैं, मगर यहाँ पर अब हम स्मार्ट क्लोथ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे गुड वाइब्रेटिंग क्लोथ्स और स्पोर्ट्स वियर है जो आप लेंगे तो इस तरीके के वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं वो, जो एक योगा, जब आप योगा वियर हम पहनते हैं तो उसमें जो एक अलग पॉजिटिव वाइब्रेशंस आए, तो ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस का आना, उस तरीके के उस टेक्सटाइल पे, उस क्लोथ्स में उन प्रकार की चीजों को डेवलप करना, या ऐसा जो कलर चेंजिंग क्लोथ्स हैं जहां अभी बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च भी हो रहा है और काफी हद तक चीजें आ भी रही हैं कि कलर चेंज हो जाता है। एलईडीज और ई इंक जो है वो स्क्रीन पे लगा होता है और एक पर्टिकुलर जो थ्रेड होता है वो इसमें जो है वो क्रोमोफस का लगा होता है, जो कि ये पर्टिकुलर जो फैब्रिक होता है, यानी ईच थ्रेड वूवन इनटू द क्रोमोफस एंड फैब्रिक इनकॉर्पोरेटेड विद इन अ टाइनी metal micro wire, and this electric current flows through the micro wires and slightly rising the thread's temperature, and this particular जो temperature raise हो रहा है, इस temperature raise के साथ साथ जो कलर है वो particular चेंज होता जाएगा। तो हमने एक particular क्लोथ पहना है और इस क्लोथ का कलर भी चेंज हो पा रहा है। This is all done by the chemical engineering along with the IT sector और the computer engineering। तो हम इस तरीके से ऐसे क्लॉथ वियर कर लें कि जब हम चाहें तो हम अपना कलर चेंज कर सकते हैं उसको, ये भी पॉसिबल है। पर्टिकुलर ऐप जो आपके सेलफोन पे होगा और इस सेलफोन के ऐप के थ्रू आप अपने कलर वियर जो आपने क्लोथ किया है इसका आप कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। इवन इसके अलावा कुछ ऐसे सेंसर्स हैं जो कि कलेक्ट कर रहा है मेडिकल डेटा, आपकी बॉडी पे आपने ऐसे शर्ट पहना है, पैंट पहना है, जो सेंसर्स लगा हुआ है जिसपे, और इस टेक्सटाइल पे, इस क्लोथ पे आपने ऐसे सेंसर को लगा रखा है जिसपे आप जो भी एक्टिव वियर हम कह सकते हैं इसको, एक्टिव वियर और द वर्क वियर एंड स्लिप वियर दैट कलेक्ट अ राफ्ट ऑफ अ मेडिकल ग्रेड डेटा विदाउट वेयरिंग एनी नोटिस। ये पूरा जो है वो इस तरीके की ईसीजीज और रेस्पिरेटरी फिजिकल एक्टिविटी सेंसर लगे होंगे जो आपके सारा डेटा को रिकॉर्ड करेगा और वो क्लाउड में जो है वो पूरा सेव कर देगा, और आप 50 घंटे के भीतर जो है वो वहां पर से एनालाइज करके उसको आप रीड कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे हमारे पास क्लोथ्स आ रहे हैं जिसपे इस तरीके के सेंसर लगे हैं, जिसपे हम आप फोन को अपना जो है वो सेल फोन को, आपके जो स्लीव्स हैं उस पर ही इस तरीके के सेंसर लगे कि आप अपना सेल फोन को भी मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इवन इस तरीके के सॉक्स अवेलेबल है, अभी शूज अवेलेबल है जिसपे मॉनिटर लगा है जो आपको पूरा कंप्रेस कर रहा है, प्रेशर डेवलप कर रहा है और आपकी पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो मॉनिटर कर रहा है। और इवन इको फ्रेंडली जो शूज हैं वो भी अवेलेबल हो पा रहे हैं, और ऐसे भी क्लॉथ्स हैं जो कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस तरीके के फैब्रिक्स है जो एक पर्टिकुलर लाइट जब पड़ती है तो वो लेजर के थ्रू जो है वो जो भी एक पर्टिकुलर मैसेज देना चाहते हैं वो आपके बैग में या आपके शर्ट पे वो मैसेज जो है वो वाइब्रेट होगा और कम्युनिकेट होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए एक और फैब्रिक है जो आपकी एनर्जी ट्रैप कर सकता है, जो सनलाइट है या विंड की एनर्जी है, पर्टिकुलर यहाँ पे केमिकल जो यूज हो रहा है वो ट्राई बायो इलेक्ट्रिक फैब्रिक्स है यहाँ पर, और ये केमिकल के थ्रू इस पर्टिकुलर, एक तो स्टैटिक एनर्जी है जो रगड़ाने से, फ्रिक्शन से एनर्जी जनरेट हो रही है वो एनर्जी, और एट द सेम टाइम जो सन की जो सोलर एनर्जी है वो एनर्जी, विंड एनर्जी, इनको भी ये ट्रैप करके जो है वो स्टोर कर रहा है। और इस स्टोर्ड एनर्जी को हम मल्टीपल फंक्शन के फॉर्म बेस्ड एनर्जी को हम अपने डेटा को या मोबाइल को या अपने स्मार्ट वॉच को रिचार्ज करने के लिए यूज कर पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये सारी चीजें इसलिए शेयर कर रही थी यहाँ पर कि एक्चुअली देखिए ये एक और आ गया है सेल्फ क्लींजिंग क्लोथ। यहाँ पर सेल्फ क्लींजिंग क्लोथ है कि कोई भी चीज, कॉफी गिर जा रही है, कोल्ड ड्रिंक गिर जा रहा है, तो यहाँ पर सेल्फ क्लींजिंग फैब्रिक्स अवेलेबल हो गए हैं जो कि वर्क यूजिंग द फोटोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड कंपाउंड यूज इन अ मेनी न्यू नैनो टेक्नोलॉजी सोलर सेल एप्लीकेशन। तो हम यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मटीरियल को यूज करते हुए, केमिकल को यूज करते हुए, along with the computer engineering, सेंसर्स को यूज करते हुए
हम टेक्सटाइल में इस तरीके का सेंसर लगा पा रहे हैं, इस तरीके के टेक्सटाइल को भी हमने डेवलप कर लिया है। ये टेक्सटाइल के डेवलपमेंट का कारण है कि केमिकल इंजीनियरिंग इस तरीके से इन्वॉल्व हुआ है यहाँ पर कि इस तरीके की वो हमको क्लोथ को या टेक्सटाइल को प्रोवाइड कर पा रहा है जिसपे हम इस तरीके के केमिकल्स को या चिप को लगा पा रहे हैं। तो ये जो है वो पूरा केमिकल इंजीनियरिंग ने इस तरीके से अभी और मॉडर्न फ्यूचर पे आने वाले जो आपके क्लोथ्स हैं तरीके के हम देख सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट जनरेशन है या जो नेक्स्ट रोल है केमिकल इंजीनियरिंग का टेक्सटाइल के अलावा वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे हम बहुत सारी बात कर चुके हैं और एग्रीकल्चर पे अभी सनी ने बहुत अच्छी चीजें बताई। हमेशा देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और हमेशा यहाँ पर जो है वो हम एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट हैं और हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं मगर हम अभी भी अपने फूड हैबिट के लिए कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट हमको होना पड़ेगा। तो हम अपना फूड चूंकि प्रिपेयर कर नहीं सकते हैं तो हमको अपना फूड के लिए कहीं ना कहीं क्रॉप पे ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो जो केमिकल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ी खासियत यह है कि केमिकल इंजीनियरिंग ने टाइम के अकॉर्डिंगली अपना योगदान एग्रीकल्चर के फील्ड में दिया है। बहुत पहले यदि हम देखें तो बहुत पहले बहुत सिंपल वे में क्रॉप हुआ करता था जो कि द्विचक्री जो फसल का चक्रीकरण किया जाता था और हम द्विफसली कार्यक्रम करते थे कि एक बार हमने नाइट्रोजन या दाल और इस तरीके के क्रॉप जो है वो हमने सॉइल पे ग्रो कर दिया जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर लेते थे, नेचुरल नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर लेते थे और सॉइल जो है वो नाइट्रोजन एनरिच हो जाता था और उसके बाद हम ऐसे क्रॉप्स या ऐसे उसमें हम लगा लेते थे फसल जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं कर पाता था। तो वो फसल में को नाइट्रोजन मिल जाती थी सॉइल के में प्रेजेंट नाइट्रोजन के थ्रू और फिर हम अगेन जो है वो क्रॉप रोटेशन करते थे और फिर से हम नाइट्रोजन जो पूरा अब डेफिशिएंट हो गया सॉइल उसके लिए दोबारा हम कोई ऐसा नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला प्रॉपर्टी रखने वाला राइजोबियम दाल वगैरह लगाते थे और इस तरीके से सॉइल पे नाइट्रोजन की जो पॉसिबिलिटी थी अवेलेबिलिटी थी उसको बनाए रखते थे। मगर जैसे कि आपको पता है कि इतना पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ता चला गया, ग्लोबलाइजेशन होता चला गया, तो यहाँ पर डेफिनेटली हमको क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना हमारी नेसेसिटी हो गई और इसके तहत केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के ही तहत हमने एक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री डेवलप की और ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के तहत ही क्रॉप की प्रोडक्टिविटी, फूड की प्रोडक्टिविटी, इवन आप हर प्रकार की चीजें इस केमिकल इंजीनियरिंग और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के तहत कर सकते थे। फर्टिलाइजर्स में मेनली आता है आपका कर सकते थे दैट मीन्स कि सपोज आपको फ्रूट को प्रिपेयर करना है, सीड को जर्मिनेट करना है या फ्रूट को बहुत आसानी से पकाना है, सीडलेस फ्रूट को हमको डेवलप करना है, तो इन सारी चीजों पे हमने केमिकल इंजीनियरिंग को इन्वॉल्व किया और धीरे धीरे हमने इस पे काफी हद तक हमने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया। बट डेफिनेटली ये बहुत सारी चीजें हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी को तो इम्प्रूव किया ही, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ये जब इस वाले एक समय ऐसा था कि हमको प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी थी, उस वक्त हमने केमिकल इंजीनियरिंग को बेस बना करके बहुत सारे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को हमने में इन्वॉल्व होकर के हमने क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ा ली। देन हमको धीरे से समझ में आया कि कुछ जो फर्टिलाइजर्स हैं उन फर्टिलाइजर्स में कहीं ना कहीं कोई टॉक्सिक एलिमेंट्स भी हैं, इनका जो एक्सेसिव यूज हो रहा है वो एक्सेसिव यूज से जो है वो जैसे कि आप कह रहे नाइट्रेट है या मरकरी है या एल्यूमिनियम नाइट्रेट है, पोटेशियम क्लोराइड है, कैडमियम है, ये सारे फर्टिलाइजर्स जब बहुत लंबे समय तक हमने अपने सॉइल में डाला तो कहीं ना कहीं वो सॉइल की प्रोडक्टिविटी को तो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को तो इम्प्रूव कर रहे हैं मगर सॉइल पे टॉक्सिक कंटामिनेंट्स को जो है वो बढ़ोतरी कर रहे हैं और क्रॉप्स में भी कहीं ना कहीं एडल्ट्रेशन हो जा रहा है, फूड में भी कहीं वो इन चीजों का ऑर्गेनिक मटेरियल का एडल्ट्रेशन हो जा रहा है और इसको यदि हम कंप्लीटली लेते हैं तो हमको जो है वो बहुत सारी बीमारियां जो है वो धीरे धीरे करके पैर पसारती चली जा रही हैं, जिसमें एट लास्ट जो है वो कैंसरस जो है डिजीज जो है कैंसर या किडनी की डिजीज है, किडनी डिसऑर्डर है, लंग है, लीवर है डिसऑर्डर है, आई इरिटेशन है, थ्रोट डिसऑर्डर्स हैं, पल्मोनरी डिसऑर्डर्स हैं। इस तरीके के जब हमने डिसऑर्डर्स देखा तो पता चला कि नहीं फर्टिलाइजर्स में बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स के जो है वो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, उसके भी साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो नाउ अगेन अब केमिकल इंजीनियरिंग ने ये किया कि ठीक है साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, अब हम नाउ अगेन हम जा सकते हैं कि हम चले जाएं
इस तरीके की चीजों में, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक वे। तो ऑर्गेनिक वे में जब हम जाते हैं तो डेफिनेटली जो मॉडर्न हम फार्मिंग देखेंगे तो ये एग्री बिजनेस के फॉर्म में हो रहा है कि एग्रीकल्चर अलोंग विद बिजनेस, जितना हम वैल्यू एडेड वैल्यू रॉ मटेरियल इतने अच्छे से हम डालें कि मैक्सिमम क्वांटिटी में हम जो है वो बिजनेस भी, बिजनेस दैट मीन्स हम उसके न्यूट्रिएंट यानी फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन और एम्प्लॉइंग इन द इक्वल ऑफ द लाइफ इन मैनी होम्स एट रिस्क ऑफ एक्सक्लूसिव एंड वर्नेबिलिटी। इंटेंसिव फार्मिंग यानी कम से कम लैंड पे बहुत ज्यादा हम फार्मिंग कर सकें, तो वो होता है इंटेंसिव फार्मिंग। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसी पे मैं आई थी। ऑर्गेनिक फार्मिंग दैट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम विच अवॉइड और लार्जली एक्सक्लूड the use of synthetically compound fertilizer, pesticide, growth regulator एंड ये जो है ये सिंथेटिक फाइबर से हम जो है वो ऑर्गेनिक फाइबर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरफ मूव करें, ये होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए पहले भी होती थी जैविक खेती, मगर अब ये और अच्छी तरीके से हो रही है कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाते हुए हम जो है वो ऑर्गेनिक यानी सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को ना यूज करते हुए और किस तरीके से हम क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएं और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करें। इस पे भी कंटिन्यूअस रिसर्च चल रहा है और ये बहुत ज्यादा रिसर्च इस पे चल रहा है अभी, क्योंकि ये हमारा बहुत ही ये मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि हम यहाँ पे क्रॉप से जुड़े हुए हैं। Then sustainable agriculture. Sustainable agriculture is a farming in the sustainable way, meeting the society present food and textile needs without the compromising the ability for current or future generation to meet their needs. The farmer are now able to buy and sell their product in the world market. और इसी पर वे करते हुए जो मैं बता रही थी आपको कि किस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी केमिकल इंजीनियर्स के थ्रू हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी सॉइल लैंड, यहाँ पर लैंड जो है वो बहुत कम होता जा रहा है हमारे पास। तो विदाउट सॉइल और विदाउट सनलाइट भी हम बहुत आसानी से एग्रीकल्चरल लैंड के बगैर भी हम क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोफोनिक प्रोसेस। यहाँ पर वर्टिकल जो फार्मिंग का कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, यहाँ पर वर्टिकल फार्मिंग में जो है मेनली इंस्टेंट ऑफ सॉइल, एरोफोनिक, हाइड्रोफोनिक एंड द एक्वाफोनिक ग्रोइंग मीडियम्स आर यूज्ड to as a growing media or the growing media for the crop. As a technique become scientific, efficiency of the process increase as a result a vertical farming become a sustainable, requiring 95% less water and compared to the other farming method. यहाँ पर देखिए जो वाटर की प्रॉब्लम है, ये वाटर की प्रॉब्लम जो कम से कम पानी में हम बहुत अच्छे से सिंचाई कर लें। देखिए पेड़ क्या करता है, पेड़ सॉइल में जो अवेलेबल है न्यूट्रिएंट, इस पे वाटर वो सॉइल का अवेलेबल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, डिसॉल्व करता है, और वाटर में जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट होता है वो सॉइल की रूट उसको एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करके वो न्यूट्रिएंट को ग्रो होता है। तो यहाँ पर सॉइल में अवेलेबल न्यूट्रिएंट, अभी लैंड नहीं है हमारे पास, तो हमने सॉइल की जो अवेलेबिलिटी है, जो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है जो सॉइल से मिल रहा है, हमने उसको भी हटा दिया। जो बहुत ज्यादा सिंचाई के लिए हमको पानी लग रहा था, इसको भी हमने मिनिमाइज किया, और वर्टिकल फार्मिंग के थ्रू, वर्टिकल कॉलम्स के थ्रू हमने सारे न्यूट्रिएंट, जिसको हम कह रहे हैं, जिस प्रोसेस को हम कह रहे हैं एक्वाफोनिक प्रोसेस, या एयर में भी जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है जिसको हम कह रहे हैं एरोफोनिक प्रोसेस, और हाइड्रोफोनिक प्रोसेस जो पानी में न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, इन न्यूट्रिएंट से सीधे सीधे जड़ों को हम वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और जब उन न्यूट्रिएंट को वाटर से या एक्वा से या मीडिया से एब्जॉर्ब करके क्रॉप को वो यदि प्रोडक्ट कर रहा है, तो दैट इज द न्यू टर्म विच इज हाइड्रोफोनिक टर्म। और ये बहुत ज्यादा अभी जो है वो बहुत यूज में आने लगा है। और देखिए आप बहुत कम जगह पे जो है वो क्रॉप का रोटेशन हो जा रहा है, क्रॉप का प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और क्रॉप की में कहीं पे भी न्यूट्रिएंट की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और न्यूट्रिएंट प्रॉपर मिल रहे हैं। और इस तरीके से हमने लैंड की जो कमी हो गई थी उसको हमने रिजॉल्व कर लिया, हमने पानी की जो कमी हो रही थी इसको हमने रिजॉल्व कर लिया। तो ये जो पूरी टेक्निक डेवलप हो पाई है, ये अलॉन्ग विद केमिकल इंजीनियरिंग, यानी कि डेफिनेटली इसमें एग्रीकल्चरल है और बहुत सी और चीजें हैं, बट केमिकल इंजीनियर्स का भी इसमें जो है वो बहुत बड़ा योगदान है, और इस तरीके की हम फार्मिंग जो है वो कर पा रहे हैं अलॉन्ग विद एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफ फार्मिंग। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी बहुत सारी चीजें हैं जो दैट मीन्स द केमिकल इंजीनियरिंग का जो हम कह रहे हैं कि रोल ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड एग्रीकल्चर। तो
जैसी जरूरत हुई है केमिकल इंजीनियरिंग ने अपना वैसा रोल प्ले किया है एग्रीकल्चर के फील्ड में। जो भी बाय प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अभी देखिए इसके भी एग्रीकल्चर के भी जो बाय प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इसको भी जो है वो हम किसी भी तरीके से मैन्योर में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन अगेन इस मैन्योर को हम जो वो सॉइल कंडीशनिंग के फॉर्म में भी यूज कर पा रहे हैं। तो उसके लिए भी जो टेम्परेचर है, जो सॉइल जो मॉइस्चर रिक्वायर्ड है, जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, ये पूरी टेक्नोलॉजी के तहत, देखिए कॉमन चीजों में तो ये होना ही होना है, बट एक टेक्नोलॉजी के तहत, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर पाए, ताकि उसका जो क्वालिटी इंप्रूव कर पाए, वो यदि हम टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कर देते हैं तो डेफिनेटली जो आउटपुट आता है किसी भी चीज का वो और बेटर हो जाता है। तो इंजीनियर्स का काम क्या है? इंजीनियरिंग का काम है किसी भी प्रॉब्लम में, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढना, कोई भी लॉजिक तरीके से किसी भी रीजनिंग के साथ सॉल्यूशन को यदि प्रोवाइड कर देता है तो दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। तो जैसे कि अभी मैडम ने भी बताया था कि हम सुबह उठते हैं से लेके रात के सोते तक हर जगह हमारे अगल बगल टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी दैट इज बेस्ड ऑन मींस हर प्रकार की चीजों पे आप देखिए टेक्नोलॉजी। अभी हम बात कर रहे हैं तो भी हम एक टेक्नोलॉजी के थ्रू हम जुड़े हुए हैं। हम आज की सेलफोन में चले जा रहे हैं, स्मार्ट हम टेक्सटाइल पे चले गए, स्मार्ट हमने देखी एग्रीकल्चर लैंड पे हम आ गए। तो हर जगह इन्वॉल्व है टेक्नोलॉजी। तो अकेला कोई इंजीनियरिंग कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता, हमेशा अभी देखिए हम इसीलिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है वो हमेशा मल्टीपल डिसिप्लिनरी वाली टेक्नोलॉजी के तहत हम आगे चलेंगे, क्योंकि जितना ग्रो हम कर सकते हैं वो हमने किया है। नाउ अब जरूरत है कि हम हर एक दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ मिलें, कि केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो कंप्यूटर वालों के साथ मिल जाए, कंप्यूटर वाले जो है वो मैकेनिकल के साथ मिले। जहां पर आप फ्यूल की बात करते हैं, सीमेंट की बात करते हैं, या हम किसी और इंडस्ट्री की बात करते हैं, डाइंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो हर इंडस्ट्री में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी कंट्रीब्यूशन है, सिविल इंजीनियरिंग का भी कंट्रीब्यूशन है, केमिकल इंजीनियरिंग का भी कंट्रीब्यूशन है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी कंट्रीब्यूशन है। तो अब जो चीजें आ रही हैं उसमें कोई भी इंजीनियरिंग कभी भी अकेले कुछ नहीं कर रहा है। बेस्ट प्रोडक्शन के लिए, क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए हमको सभी इंजीनियरिंग का वहां पे समावेश करना पड़ेगा, और किया भी जा रहा है, कंटिन्यूअसली किया भी जा रहा है। और नई नई टेक्निक्स के थ्रू जो है हम और नए तरीके से जो है वो सोसाइटी को कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है ये इंजीनियरिंग, और डेफिनेटली ये चीजें हो भी रही हैं, और देर सवेर और लगातार जो है इसमें हमको चीजें जो है वो नजर भी आ रही हैं। तो ये एक मॉडर्न एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको आपने कहा हाइड्रोपोनिक कॉन्सेप्ट। देन द अनदर रोल ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट का फील्ड तो इतना वास्ट है कि जब हम किसी भी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा सीमेंट इंडस्ट्री, तो सीमेंट इंडस्ट्री में भी केमिकल इंजीनियरिंग का कंट्रीब्यूशन है। यदि सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग ही आप देखेंगे तो सबको पता है कि सिविल इंजीनियरिंग में सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग हम बहुत ही बेसिक उसमें पढ़ लेते हैं कि ड्रॉ और वेट प्रोसेस के थ्रू सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आर्जिलेशियस मटेरियल है, कैल्केरियस मटेरियल है, और ये मटेरियल की कंटिन्यूअसली प्रोसेस के बाद एक सीमेंट पैलेट बन रहा है। इसके बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, और इन बाय प्रोडक्ट्स जब डेवलप हो रहे हैं तो एयर भी पॉल्यूट हो रहा है, वाटर भी पॉल्यूट हो रहा है, और एट द सेम टाइम बहुत सारे हमको पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट भी लग रहे हैं। बट एनवायरमेंट के फील्ड में ये जो एक सपोज ये इंडस्ट्री हुई, या आप दूसरी कोई इंडस्ट्री देख लीजिए, फॉर डाइंग इंडस्ट्री है, तो आपने डिफरेंट डाइंग को डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन के साथ आपने डाई प्रिपेयर किया, उसके भी बाय प्रोडक्ट्स हुए। और कोई एक पर्टिकुलर मेटल यदि प्रेजेंट है तो उसका इंटरफेयरिंग मटेरियल या मेटल प्रेजेंट है तो उसको आपने पहले हटाया, तो उसके लिए भी आपने प्रोसेस किया, उसके भी कुछ बाय प्रोडक्ट्स डेवलप हुए। वो हजार्डस हैं, या डेफिनेटली हजार्डस तो हर चीज हो जाएगा। जब एक पर्टिकुलर लिमिट से कहीं पे भी वो लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो डेफिनेटली वो एनवायरनमेंट को जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो ये एनवायरनमेंट पे हर एक इंडस्ट्री अपना इम्पैक्ट क्रिएट करती है। यदि आप पावर सेक्टर ले लें तो पावर सेक्टर पे बॉयलर में आपने स्टीम जनरेट की, तो स्टीम जनरेशन के बाद भी जो बहुत सारे स्लज या स्केल का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो आपने कहीं पर डीस्केलिंग करके रख दिया। या किसी भी इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए जो भी रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो रॉ मटेरियल कहीं पर डंप करके रखा हुआ है, तो वो डेफिनेटली लैंड को भी लीच कर रहा है, या
पर्टिकुलर इंडस्ट्री से जो बाई प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहे हैं जिसको आपने रख दिया है, जो इंडस्ट्रियल अफ्लुएंट जनरेट हो रहे हैं जो आपने रख दिया है, सॉलिड वे में है जो आपने किसी लैंड में आपकी इंडस्ट्री के अंदर ही रख दिया है, तो ये सारे अफ्लुएंट भी कहीं ना कहीं लीज्ड आउट होकर के एनवायरनमेंट को जो है वो डिग्रेडेट कर रहे हैं और उसको हजार्डस क्रिएट कर रहे हैं। या इंडस्ट्रियल, जैसे सर ने भी बताया, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट डिस्चार्ज हो रहा है उसको आपने किसी भी सपोज आपने किसी पानी में, नदी में डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो ये जो सीपीसीबी के नॉर्म्स हैं या WHO का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली ही जो आपका इंडस्ट्रियल अफ्लुएंट के गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको उसको वहां पर डिस्चार्ज इमिट करना है। अदरवाइज ये क्या होगा, ये देर सवेर कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के फील्ड में आकर एनवायरनमेंट को कंटामिनेट करेगा। और एनवायरनमेंट कंटामिनेट होने का सीधा सीधा मतलब है, एनवायरनमेंट का अपना वर्ड अकेला नहीं है, एनवायरनमेंट जो है वो जुड़ा हुआ है आपके हाइड्रोस्फीयर से, एटमॉस्फेयर से, लिथोस्फीयर से, और एट द सेम टाइम विथ बायोस्फीयर, यानी कि लैंड, सॉइल, एयर, वाटर, along with biological activities, biological biosphere, all microorganisms, animals and human, सब उसमें एक साथ की जो एक्टिविटी होती है वो आपका एनवायरनमेंट बनाता है। तो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट का मतलब हो सकता है, वो इम्पैक्ट सॉइल पे भी हो सकता है, वाटर पे भी हो सकता है, एयर पे भी हो सकता है, एनिमल पे भी हो सकता है, ह्यूमन पे भी हो सकता है। तो यदि एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट हो रहा है तो एनवायरनमेंट को हमको डेफिनेटली क्लीन करना पड़ेगा। और ये जो क्लींजिंग प्रोसेस है इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी जब आएंगी, तो देखिए जो क्लासिकल डिसिप्लिन है केमिकल इंजीनियरिंग की, इट हैव बीन एक्सटेंसिवली अप्लाइड टू टिपिकल and emerging environmental technologies such as wastewater treatment, anaerobic digestion, biofiltration, etc. Among them, it is important to highlight these chemical engineering classical topics like chemical reaction, design, kinetics, stimulation, control, modeling, and especially heat and the mass balance. Through this chemical engineering fundamentals, a lot of environmental processes have been described and designed. However, environmental science and technology is evolving so fast that some processes are still need a chemical engineering approach. हर चीज सिर्फ हमारे हम बहुत सी चीजों की थ्योरी जानते हैं, बट जब हम उस पर टेक्निक्स अप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो बेटर आता है। तो किसी भी चीज का जब केमिकल से रिलेटेड हम बात करेंगे, हम जब प्रोसेस से रिलेटेड, देखिए केमिकल इंजीनियरिंग सीधे सीधे प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, तो जब भी हम किसी भी चीज की प्रोसेस की बात करते हैं तो वहां पर केमिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व हो जाता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल कोई भी इंडस्ट्री की प्रोसेस हो। तो प्रोसेस होगी कहीं ना कहीं तो रॉ मटेरियल लगेगा, प्रोसेस होगा कहीं ना कहीं तो बाय प्रोडक्ट्स भी जनरेट होंगे। तो वो रॉ मटेरियल के, वो बाय प्रोडक्ट्स के जो भी एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स होंगे उनको हम किस तरीके से केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के तहत हम उसको मिनिमाइज कर सकें और उसको हम एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट को कम कर सकें, ये भी केमिकल इंजीनियरिंग इस पर भी जो है वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के थ्रू काम कर रहा है। और फॉर एग्जांपल एक और हम जैसे बात कर सकते हैं कि रिसाइकल, हम कहते हैं कि 4R स्ट्रेटेजीज, हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं 4R स्ट्रेटेजीज आर दियर। फॉर एग्जाम्पल 4R दैट मीन्स रिड्यूस, रीयूज एंड रिकवरी एंड रिसाइकल। दैट मीन्स जो भी मटेरियल हम सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है तो सबसे पहली चीज है कि हम रिड्यूस कर दें, हम अपनी आवश्यकताओं को ही रिड्यूस कर दें। दूसरी चीज है रीयूज, जितनी चीजें हम रीयूज कर सकते हैं वो हम रीयूज करें। अब उसके बाद जब हमने रिड्यूस कर लिया, रीयूज कर लिया, उसके बाद जो मटेरियल मिल रहा है उसको हम करते हैं रिकवर, रिसाइकल करते हैं पहले। तो जैसे बहुत सिंपल वे में हर एक व्यक्ति जानता है सब प्लास्टिक रिसाइकल हो जाती है, तो चलिए प्लास्टिक का एग्जांपल ही लेके हम करते हैं कि प्लास्टिक की रिसाइकलिंग हम कर रहे हैं, तो अब हमको पता होना चाहिए कि केमिकल इंडस्ट्री अगेन यहाँ पर यूज हो जाएगी, केमिकल इंजीनियरिंग का अगेन यहाँ पर एक बड़ा रोल प्ले होगा कि कौन सा प्लास्टिक हम मैन्युफैक्चर करें। आपने देखा सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं यूज करना है, तो व्हाट इज सिंगल यूज प्लास्टिक? जो भी प्लास्टिक्स होते हैं वो जनरली यूज होते हैं थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। तो जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो एक बार यूज करते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं वो एक बार यूज होते हैं और उसके बाद जब हम दोबारा हम इसको यूज
करते हैं तो उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, इसलिए हम उसको रिसाइकल आसानी से नहीं कर सकते हैं। जबकि जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं ये बड़े सिंपल चेन के फॉर्म में एक एडिशन पॉलीमराइजेशन से जनरेट होते हैं। तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से जनरेट होते हैं तो हम बार बार यदि उसको हम बार बार मोल्ड कर लें, बार बार रिसाइकिल करें, उसके शेप को कन्वर्ट करें, तो वो बहुत आसानी से अपनी डिजायर्ड शेप और एलिवेशन में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं और एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करते। तो इस तरीके के प्लास्टिक को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो ये जो पूरी रिसाइकलिंग प्लांट को लगाना या किस तरीके के प्लास्टिक को अब आगे जनरेट करना, ये पूरा केमिकल इंजीनियरिंग का फील्ड आता है। यहाँ पर केमिकल इंजीनियर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, दे डिसाइड कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी को हम रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए यूज कर पाएंगे या कर सकते हैं और क्या इसका अच्छा बेनिफिट होगा जो हम सोसाइटी के लिए बाई प्रोडक्ट्स भी ना ज्यादा से ज्यादा बन पाए, सो दैट कि बाई प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, कहीं ना कहीं देर सवेर एनवायरमेंट को पॉल्यूट करेंगे और वो हम एनवायरमेंट से हम अभी बात करते हैं अपनी या प्लांट्स की, तो हमको वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा ह्यूमन के जो कहना चाहिए ह्यूमन के हेल्थ इम्पैक्ट डालेगा। तो हेल्थ इम्पैक्ट पे मिनिमाइज करने के लिए एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन ना हो और ह्यूमन की हेल्थ जो है वो डिटोरिएट ना हो, इसलिए हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी को जो है वहां पर इन्वॉल्व कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो भी जैसे सर ने भी बताया वेस्ट वाटर है या एयर प्यूरिफायर है या हजार्डस है, देखिए हजार्डस एक बहुत बड़ा और बहुत वास्ट रेंज है। जब भी कोई प्रोसेस होती है किसी भी इंडस्ट्री में जो प्रोसेस होती है तो जो हजार्डस वेस्ट जनरेट होते हैं, इस हजार्डस वेस्ट को हम देखिए सॉलिड वेस्ट को तो कहीं ना कहीं डंप कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं, रिसाइक्लिंग मटेरियल को अलग कर सकते हैं, रीयूजेबल मटेरियल को अलग कर सकते हैं, रिकवर्ड जो हो रहा है मेटल उसको भी हम अलग कर सकते हैं और एट लास्ट जो मटेरियल कहीं से भी किसी भी प्रकार के काम का नहीं है उसको हम सॉलिड वेस्ट मानते हैं और उस सॉलिड वेस्ट को हम डंप कर देते हैं। तो डंपिंग की भी एक प्रोसेस है जिसको हम सैनिटरी लैंडफिल में हम यदि डंप कर रहे हैं तो उसकी भी पूरी प्रोसेस है जिसमें सैनिटरी लैंडफिल में जो केमिकल्स जो लीस्ट आउट होंगे आफ्टर डिग्रेडेशन, तो वो लीस्ट आउट होकर के कहीं आपके अंडरग्राउंड वाटर में ना चला जाए, इस चीज को भी हमको मॉनिटर करना पड़ेगा। तो ये कौन मॉनिटर करेगा, तो वो पर्टिकुलर जो लीचेट निकल रहा है उस लीचेट को एनालाइज करना कि उसमें क्या ऐसा कोई टॉक्सिक एलिमेंट है जो हमारे ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर सकता है, या जो हजार्डस वेस्ट में यदि हम आ जाएं तो हजार्डस वेस्ट कहीं पर डंप है तो डेफिनेटली वो भी लीज्ड आउट होगा। तो इस हजार्डस वेस्ट की और वो लीचेट में जो टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट है उन सब की हमको ट्रीटमेंट यूनिट में ले जाकर के हमको उसको ट्रीट करना होगा, जो अगेन एक केमिकल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट आता है और इस तरीके के ट्रीटमेंट यूनिट डिजाइन किए जाते हैं जो इस पर्टिकुलर टॉक्सिक और हजार्डस वेस्ट को सेग्रीगेट करें। और किस तरीके की ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट करेंगे डिपेंड करता है कि वो जो वेस्ट है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या वो इजिली फिजिकली सेपरेट हो जाएगा या वो केमिकली सेपरेट करना पड़ेगा, उसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा या उसको किसी और तरीके से मिनिमाइज करना पड़ेगा, उसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा, उसको कुछ इस तरीके के केमिकल रिएक्शन करा करके कुछ इस तरीके के बाई प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दें जो लेस टॉक्सिक हो। और उस लेस टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स जो डेवलप कर पाए हैं हम टेक्निकली और विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड ऑल, अब हम इस लेस टॉक्सिक मटेरियल को वेस्ट को हम जो है वो कहीं ना कहीं जाकर डिस्पोज ऑफ करें या कहीं हम उसको किसी भी तरीके से जो डिस्पोज ऑफ मेथड्स जो हैं उसमें जहां पर वो फिट बैठता है सुटेबल है वहां पर हम उसको उस तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। तो ये पूरा सेग्रीगेशन, ये पूरा हजार्डस वेस्ट का ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, केमिकल रिएक्शन, चूंकि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है तो ये सारी आपने सुना होगा पायरोलिसिस की प्रोसेस हो रही है, टेम्परेचर की प्रेजेंस में कोई चीजें जो है वो डिग्रेडेट हो रही है, कोई टेम्परेचर की एब्सेंस में डिग्रेडेट हो रही है। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग पर बेस्ड है। केमिकल इंजीनियर्स जो होते हैं वो इन टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं और किस तरीके की केमिकल रिएक्शन को हम कंट्रोल कर पाएंगे, किस टेम्परेचर पे कंट्रोल कर पाएंगे, कहाँ पे कितना प्रेशर हमको देना है, किस तरीके का रिएक्टर होना चाहिए, ये सारी जो टेक्निक्स है ये केमिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या केमिकल इंजीनियरिंग के थ्रू हम यूज कर पाते हैं। देखिए प्लास्टिक है, मेटल है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, ये तो बहुत
आसानी से डिग्रेडेट होते हैं और इसकी बहुत सी टेक्निक्स हो रही हैं। अभी देखिए ऑर्गेनिक डिग्रेडेबल मटेरियल्स को भी जो है वो बहुत ज्यादा तरीके से यूज किए जा रहे हैं। इसमें आपको पता ही होगा कि जो छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ में जो काऊ डंक है, स्पेशली जो हम कहते हैं गाय का गोबर, इसको भी यूज करके बहुत सारी चीजों को हम जो है वो रिसाइकल करके हम बहुत सारी चीजों को बना रहे हैं। आपने देखा होगा अभी सूटकेसेस बने हैं, क्लोथ्स बन रहे हैं, पेपर बन रहे हैं, इवन अभी मुझे पता चला है कि जीन्स वगैरह जो क्लोथ्स हैं ये भी उससे जो है वो बना रहे हैं। दैट मीन्स हम सिंथेटिक टू ऑर्गेनिक हम मूव कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा मैसेज है कि हम वेल्थ टू यानी वेस्ट टू वेल्थ कैसे मूव कर पा रहे हैं। तो इन सब चीजों पे भी टेक्नोलॉजी लग रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये पूरे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और ये सारी फील्ड पे केमिकल इंजीनियर्स का जो है वो बहुत बड़ा योगदान है। और डेफिनेटली चूंकि इन सारी जो कि आपने वेस्ट को एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया है, तो डेफिनेटली ये डायरेक्टली जो है वो सोसाइटी के लिए मैसेज जाता है, सोसाइटी के हित में जाता है। तो ये तो डायरेक्टली लिंक्ड है। यदि आपने एनवायरनमेंट पे काम किया है, कोई भी इंजीनियरिंग का ब्रांच यदि एनवायरनमेंट पे काम करता है तो वो तो सीधे सीधे ह्यूमन इम्पैक्ट और एनवायरनमेंट पे काम कर रहा है। तो ये मॉडर्न सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस चीज पे मैंने बहुत सारी स्लाइड्स बनाई थी, बट ये सारी हमने डिस्कस कर ली है। तो इवन देखिए केमिकल इंजीनियर्स हेल्प क्लाइमेट चेंज। Chemical engineers are developing a renewable energy technologies to replace fossil energy and investigating carbon dioxide capture system to reduce its atmospheric concentration and prevent Arctic sea आइस वॉल्यूम डिक्रीज। तो केमिकल इंजीनियर्स इस पे भी काम कर रहे हैं और इन्होंने भी बहुत सारे इस तरीके से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड या जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इन ग्रीन हाउस गैसेस को यदि हम मिनिमाइज कर लें या ऐसी टेक्निक्स हम कर लें कि ग्रीन हाउस गैसेस को हम किसी और चीजों में बदल दें, तो हम क्लाइमेट चेंज को एक हद तक कम कर सकते हैं। उस पे जो चीजें हो रही हैं वो यानी उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। और इस फील्ड पे भी बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे दूसरे फील्ड के इंजीनियर्स अलोंग विद केमिकल इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। सर ने भी बताया था हाइड्रोजन फ्यूल, या हम दूसरी चीज की बात करें कि जो हमारा जो फ्यूचर फ्यूल है, देखिए पहले के समय में वुड था, बहुत आसानी से अवेलेबल था। वुड से जो है वो धीरे से हम कोल पे कन्वर्ट हो गए, और जब कोल पता चला तो कोल की भी अलग अलग क्वालिटीज पे आ गए कि कोल था तो कहीं पे वुड था, फिर पिट था, लिग्नाइट था, ब्यूटेमिनस कोल था, एंथ्रासाइट था। जितने भी टाइप्स के कोल हमको रिक्वायर्ड लगे, जहां पर ब्यूटेमिनस कोल रहा, ब्यूटेमिनस हमने यूज किया, एंथ्रासाइट यूज किया, और एट लास्ट वुड की का जो कंजप्शन है उसके ड्रॉबैक्स होने की वजह से वुड के कंजप्शन को हमने कम कर दिया और हमने कोल को यूज किया। जब कोल का कंजप्शन भी पूरा खत्म हो गया तो हमने पेट्रोलियम हमको मिल गया, क्रूड ऑयल की हमने खोज कर ली, और क्रूड ऑयल के थ्रू जो है वो हमने उसका भी हमने उसको भी रिफाइन किया, और उसके भी बाद हमने उसको क्रूड ऑयल से हमने गैसोलीन है और पेट्रोलियम से पेट्रोल है, गैसोलीन है, कैरोसिन है, नेफ्था है, इस तरीके की चीजें हमने, डीजल है, ये सब हमने इजाद कर लिया और इनका हमने कंटिन्यूअस इस्तेमाल किया। अच्छा, अब कंटिन्यूअस इस्तेमाल किया, पता चल रहा है कि यहाँ पर अब पेट्रोलियम का भी जो है कंजप्शन कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब पेट्रोलियम की भी एक सीमित थी रिसोर्सेज, और वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो अब फ्यूचर में क्या हो सकता है हमारा फ्यूल? देखिए फ्यूचर में हमको कोई ना कोई अल्टरनेटिव फ्यूल रखना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन फ्यूल, देखिए अभी बहुत सारे बैटरीज हैं, जैसे कि लिथियम आयरन बैटरी है, लिथियम आयरन बैटरी से भी हमने और भी बहुत सारी बैटरी देखी है, मगर लिथियम आयरन बैटरी पे भी बहुत सारा काम हो रहा है। या आप कहेंगे कि पर्टिकुलर जो हाइड्रोजन फ्यूल है, हाइड्रोजन फ्यूल में स्पेशली फॉर एग्जांपल बहुत सी ईवी कार्स हैं या इलेक्ट्रिक कारें जो है वो अब आ रही हैं। तो जब इतनी इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं और हमारे पास पेट्रोलियम नहीं है, तो हम क्यों फिर नई अल्टरनेटिव फ्यूल्स पे इतना ध्यान दे रहे हैं? तो देखिए जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, इस पे अपना अलग एक रिसर्च चल रहा है, मगर अभी भी जो आईसी जो इंटरनल कंबशन इंजन्स हैं, ये इंटरनल कंबशन इंजन्स 100% तो खत्म नहीं हो रहे हैं। और आप इकोनॉमी देखिए, यदि आप हम सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी के लिए बात करें, तो इकोनॉमी भी यदि आप देखें तो बहुत सारे बड़े बड़े सेक्टर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्री से लेके, यानी पूरे एक अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें हम, वहां से लेकर के आपकी सड़कों के किनारे पे जो इंटरनल कंबशन इंजन्स के लिए मैकेनिक काम
कर रहे हैं, इन सब के लिए यदि हम बात करें तो अचानक से यदि हमको एक ऐसा फ्यूल निकाल लें और उस पे हम चले जाएं और इंटरनल कंबशन इंजन को अचानक से हम बंद तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी जो है वो खत्म हो जाएगी, बैठ जाएगी। इसलिए बेटर है कि हम हाइड्रोजन फ्यूल या कोई ऐसे दूसरे फ्यूल पर चले जाएं जो अल्टरनेटिव मेथड्स हों, और इस पे भी अभी बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं। डेफिनेटली हाइड्रोजन एज अ ग्रीन फ्यूल जो है वो काफी हद तक डेवलप किया जा चुका है और इस पे भी काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है कि यूरेनियम भी एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है फ्यूल के लिए या एनर्जी के लिए। जैसे कि देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अभी इतना तो सभी को पता है कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं, बट अब ये इस यूरेनियम से जो है वो हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर लें, या इस पे भी अभी हमारे भारत में काम चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लें हम न्यूक्लियर पावर से, दैट इज यूरेनियम। और देखिए जैसे अमेरिका है, अमेरिका में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूरेनियम के थ्रू ही मिल रही है, तो इसलिए वो सस्ती भी है एज कम्पेयर टू हमारे पास। अभी भी हम वही अपने पुराने ट्रेडिशनल मेथड पे हैं कि अभी भी हमको डीजल से, पेट्रोल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमको एक ये वाले कॉन्सेप्ट को भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम भविष्य में और ज्यादा एनर्जी, जो विंड है, जो आपके सोलर है, विंड है, हाइड्रो पावर है, इन एनर्जीज के अलावा और कौन सी एनर्जी जो है इसको हम आगे ला सकते हैं। तो फ्यूचर एनर्जी में, फ्यूचर फ्यूल में हाइड्रोजन फ्यूल है, फ्यूचर एनर्जी में आपका यूरेनियम जो है वो फ्यूचर फ्यूल के एनर्जी के फॉर्म में यूज होगा। देखिए हाइड्रोजन है या यूरेनियम है, ये ओके पता है सबको कि हाइड्रोजन से एनर्जी बनती है, मगर केमिकल इंजीनियर्स ये कर रहे हैं या दूसरे इंजीनियर्स मिलके ये कर रहे हैं कि किस तरीके से ये हाइड्रोजन, देखिए बिल्कुल हाइड्रोजन जो है वो कहीं पे भी रिएक्ट कर गया, और कंबशन मैकेनिज्म क्या है इसका कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फटाफट वो रिएक्ट करके जो है वो डेंजर हो जाए। तो किस तरीके से हम उस एनर्जी को बनाएं जो हमारे लिए सेफ हो। भाई कार में, ट्रेन में बैटरी लगा देना, हम तो बचपन से देख रहे हैं ना भाई, कार में बैटरी लगा दो तो कार छोटी सी चलने लगती है, बच्चों की टॉय ट्रेन चलने लगती है, मगर उस बैटरी को हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जब लगा दें तो वो सेफली चले, वो हाई टेम्परेचर पे भी विद स्टैंड हो, फटे नहीं वो बैटरी। तो इस पे जो रिसर्च का काम चलना है, उस बैटरी से जो काम चलना है वो लिथियम आयन बैटरी को हम रिसर्च कर रहे हैं, और कि सेफली, एनवायरमेंट सेफली और साथ में सेफली जो है वो चीजें चल पाए, हाइड्रोजन फ्यूल भी कैसे सेफली हम यूज कर पाए, इस पे जो है वो रिसर्च चल रहा है। और इस तरीके से पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हुए हम केमिकल इंजीनियर्स जो है वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम देखिए, अब ये बायोमेडिकल वेस्ट को मैं लेती हूँ लास्ट में, जितने भी मेडिसिन आते हैं जो केमिस्ट से रिलेटेड हैं, जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो हमेशा केमिस्ट आएगा। तो जब टेक्नोलॉजी होगी, एक होता है दवाइयों का बनना और दूसरा आता है उसमें टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्व होना। एक होता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और दूसरा होता है केमिकल इंजीनियरिंग। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो मेडिकल साइंस में जितने भी हमको इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट हम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के तहत बनाते हैं। वहां पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है केमिस्ट भी, वहां पर 100% इन्वॉल्व होता है केमिकल इंजीनियर भी। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। हम इसको कह सकते हैं कि एक प्रकार से दोनों एक ही है इस फील्ड में। तो जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल एंड द डिजाइन कॉन्सेप्ट टू मेडिसिन एंड बायोलॉजी for healthcare purpose. Biomedical engineers apply the tool of chemical engineering modeling and analysis to study the function and response of organs and body system to explain the mechanism for a transport of substance within the body and to design artificial organ and artificial tissues, etc. So this is just possible just because of the biomedical engineering and chemical engineering. So over the past half century, chemical engineers have made rich and varied contribution to the many biomedical advancement in an effort to modernize disease diagnosis and treatment options, improve the safety and efficiency of drug delivery mechanism, and achieve a better therapeutic outcomes. The ultimate objective in this endeavors is to help people live longer, healthier, more productive lives. So देखिए, बड़ा ये तो हमको सबको पता है, जो भी केमिकल्स बन रहे हैं, जो भी मेडिसिन बन रही है, उसमें केमिस्ट भी इन्वॉल्व है, बायोमेडिकल साइंस भी इन्वॉल्व है, एट द सेम टाइम लाइफ साइंस भी इन्वॉल्व है, बायोलॉजी भी इन्वॉल्व है, बॉटनी भी इन्वॉल्व है।
along with जो टेक्नोलॉजी बन रही है वो आ रही है केमिकल इंजीनियर्स का यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन है, केमिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व हो रही है। देखिए किडनी डायलिसिस, पहले किडनी डायलिसिस जो होती थी वो सीधे जो है वो हॉस्पिटल्स में होती थी, बहुत खर्चा भी बहुत ज्यादा आता था, मगर अब जो किडनी डायलिसिस है वो थोड़े कम खर्चे पे आसानी से हो पा रही है, और इवन हम घर में भी पेशेंट है तो घर में भी किडनी डायलिसिस पॉसिबल हो पाई है। तो ये जो किडनी डायलिसिस पॉसिबल हो पाई है ये जस्ट बिकॉज ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। देखिए द किडनी डायलिसिस मशीन रिप्रेजेंट एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ द लाइफ एनहांसिंग synergy that result when chemical engineers join forces with the physician and biomedical researchers. These artificial kidneys are the essential mass transfer device, and they cleans the blood and the removing elevate the leaves of salts, excess fluids and metabolic waste product. So this kidney dialysis जो इतनी आसानी से possible हो पाई है ये just because of the biomedical science development and along with the chemical engineering. And the cleansing the blood, जो blood cleansing की process हो रही है, देखिए जो blood cleansing की process है, the first machine used for the home hemodialysis, the Milton Roy Model A, was designed by a chemical engineering professor, Les Babb, in order to help the daughter of a friend. That means उनके फ्रेंड की डॉटर को हेल्प करने के लिए अपने ही एक केमिकल इंजीनियर ने ही लैब में जो है वो पहली क्लींजिंग ब्लड क्लींजिंग डायलिसिस की मशीन जो है वो बनाई थी। इसके अलावा ट्रीटिंग डायबिटीज बहुत कॉमन हो रहा है, जो डायबिटीज की के पेशेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। देखिए इंसिडेंट ऑफ द डायबिटीज इन वन ऑन द रेस। To control this chronic disease, many patients must test glucose level in their blood and regularly inject themselves with insulin. Through the combined effort of the chemical engineers, physicians, and the biomedical researchers, improved techniques for the monitoring blood glucose level and administering the insulin have been developed. तो ये जो हम इतनी आसानी से अपने घर में बैठ करके अपना ही मॉनिटर कर लेते हैं इंसुलिन ब्लड में, तो ये भी पॉसिबल हो रहा है थ्रू द टेक्नोलॉजी, और ये हर व्यक्ति जो है वो आसानी से ब्लड इंसुलिन अपना जो है वो मॉनिटर कर पा रहा है। एट द सेम टाइम टिश्यू इंजीनियरिंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ द लिविंग सेल एज बिल्डिंग मटेरियल। तो इंजीनियर्ड टिश्यू आर बीइंग क्रिएटेड टू रिपेयर और द रिप्लेस द डैमेज और डिजीज ऑर्गन एंड टिश्यू. And now, some of the function performed by the human body can be augmented to or replicated by these innovative multidisciplinary technology along with the chemical engineering. देखिए जैसे कहते हैं ना, हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो कभी भी कोई भी एक चीज अकेला कुछ भी नहीं कर पाता है, मगर सारी चीजें मिल जाती हैं तो हम बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं। यही इसका ही सबसे अच्छा एग्जांपल केमिकल इंजीनियरिंग है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमको जो है वो अभी वुहान वायरस ने दिया है, जिसको हम कह रहे हैं कोविड, जिससे हमारा देश अभी भी निकल भी पा रहा है और जूझ भी रहा है। तो यहाँ पर देखिए केमिकल इंजीनियर्स ने किस तरीके से कोविड के अगेंस्ट फाइट पे भी भूमिका निभाई है। अपार्ट फ्रॉम द सोशल डिस्टेंसिंग, देयर इज अ नीड टू एंश्योर अ ग्रेटर सेफ्टी फ्रॉम द वायरस इट मीन्स ऑफ द हैंड वॉशेस, सैनिटाइजर्स, पीपी किट एंड the development of the unfailing vaccines. For example, हमने सबने अभी पिछले 2-2.5 साल से हम लगातार सुन रहे हैं सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीन और वायरस, ये 4-5 चीजें हम लगातार सुन रहे हैं। इस पे देखिए सैनिटाइजर्स, द डेवलपमेंट ऑफ द इफेक्टिव हैंड sanitizer involve the researcher on the quick action effectual alcohols and the other chemicals which destroy almost all category of the pathogenic organism. These composition and its large scale production for the masses is designed by a chemical engineers. And the masses, देखिए masses में भी हमने कहा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, देन हमने कहा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बता रहा है कोविड कि टेक्सटाइल में मास्क बना, पर इस मास्क में आपने ऐसे नैनो इंजीनियरिंग, नैनो पार्टिकल्स इन्वॉल्व कर रहा है अभी कि ये पर्टिकुलर मास्क जो है वो ब्रीदेबल भी हो, और एट द सेम टाइम ये सभी प्रकार के वायरसेस को जो है वो सेपरेट भी कर पाए. सो द मास्क हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कोविड-19 invented word, and chemical engineers are working to develop a vital filtration mask that will provide strong protection along with the high breathability and comfort. The focus on developing
new nano-engineered membrane material, including the different nanoporous filter materials for protective fabrics, respirators, and the rapid separation of the biological particles from clinical sample. तो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ एक नैनो मटीरियल, नैनो टेक्नोलॉजी के साथ एक इस तरीके का मास्क बनाने पे भी हमारा रिसर्च अभी भी कंटिन्यू है और चल रहा है. Then the PPE kit, आपको पता होगा कि PPE kit is very essential. At the same time, उस PPE kit को पहन करके हम बहुत आसानी से ब्रीथ करना और बहुत आसानी से वो सर्वाइव करना is very difficult. So design the PPE kit that are breathable for the skin while offering the maximum protection. And the medicines, there are a very few options available in the therapeutical drugs when it comes to treating COVID-19. तो पुरानी दवाइयों पे भी काम किया गया, नई दवाइयों पे भी काम किया गया, लगातार बहुत सारे रिसर्च किए गए, इतने कम समय पे किया गया. Then the chemical engineers are collaborating with the virologist to help the expanded SARS-CoV-2 antiviral drug screening by the incorporating vesicles into the high throughput screening process. इस पे भी chemical engineers लगातार काम कर रहे हैं. And the rapid diagnosis and the vaccine development, and the chemical engineers are trying to create a membrane incorporated vital practical particle separation device, and this device could be used to the separate virus particles or serum from 15 ml whole blood in 10 minutes without the need for a centrifugal or any electricity. This can help in developing method of rapid diagnosis and the expanded vaccine development. Chemical engineers in the pharmaceutical and the research field are directly involved in the development of COVID-19 disease, fighting equipment and drug against the disease. देखिए ये कोविड-19 ही अपने आप में बताता है कि अकेला केमिकल इंजीनियरिंग कुछ नहीं है, अकेला मैकेनिकल. यहाँ पे देखिए आप कोविड में याद कीजिए, हमको हर प्रकार की इंजीनियरिंग काम आई है. हमने कहा केमिस्ट, हमको वैक्सीन लगा, मेडिसिन लगा, मास्क लगे, टेक्सटाइल, इसके अलावा बहुत बड़ी हमने बहुत ह्यूज अमाउंट में जंबो हमने रिकवरी सेंटर बनाया. तो हमको सिविल स्ट्रक्चर्स जो बहुत कम समय में जो है वो सिविल इंजीनियरिंग भी रिक्वायर्ड लगी कि जो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स लगे हमको वहां पर. एट द सेम टाइम बहुत सारे हमको मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगे. तो ये सारों के साथ मिलकर के जो है, सारी इंजीनियरिंग के साथ मिलकर के जो है वो हम जो है वो कोविड के अगेंस्ट खड़े हो पाए. और काफी हद तक हम इस पे अभी भी रिसर्च चल रहे हैं और काफी हद तक हमने इसको जो है वो समझ पाए. तो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि केमिकल इंजीनियर्स जो है वो कैन चेंज द वर्ल्ड, और वो हर एक फील्ड में जो है वो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ इम्पैक्ट दे रहे हैं, कुछ ना कुछ बेनिफिशियल. केमिकल इंजीनियरिंग इज डेफिनेटली बेनिफिशियल टुवर्ड्स द सोसाइटी. हर एक तरीके से सोसाइटी हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं चीजों को केमिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रही है. हम जी रहे हैं, हमारे चारों ओर जो भी चीजें हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग. हम एक स्विच ऑन भी करते हैं तो फैन चलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग. हम टीवी ऑन करते हैं, हम इतने सारे डेटा केबल देखते हैं, हमारे पास इतने, हमारे फोन में हाथ में टीवी आ गया है. तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी सारी चीजें पॉसिबल हैं. तो हर एक प्रकार की टेक्नोलॉजी हर जगह इन्वॉल्व है. तो केमिकल इंजीनियरिंग का, जैसे कि मैडम ने भी बोला था कि उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच ली और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और वो वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट जो है वो टॉप की ब्रांच है. और डेफिनेटली है, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग का स्कोप आने वाले समय में वास्तव में बहुत ज्यादा है. हर फील्ड में केमिकल इंजीनियर जो है वो अपना योगदान दे सकते हैं. किसी भी कोर ब्रांच के साथ वो रिलेट होकर के जो है वो कोऑर्डिनेशन में, कोलैबोरेशन में वो जो है वो कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का फील्ड हो, फूड प्रोसेसिंग हो या एनवायरमेंट हो या कोई भी हो. तो डेफिनेटली आने वाला समय जो है वो केमिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छा स्कोप है, और ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छी ब्रांच है और इसमें बहुत ज्यादा स्कोप्स हैं. तो केमिकल इंजीनियरिंग कैन चेंज द वर्ल्ड. सो द केमिकल इंजीनियर्स कंपनीज डिराइव्ड innovation across the multiple industries, from energy generation to healthcare. Common products such as antibiotic, vaccine, plastic, electronics, gasoline would not exist without the work of chemical engineers. These professionals use their expertise to develop and improve the processes and the material that power the modern world. Some specialize in food processing, petrochemicals, or the manufacturing, while others focus on the environmental health and safety.
देखिए ये खत्म नहीं हुआ, ये एक छोटा सा चर्चा है जो हमने कुछ ही इंडस्ट्री को लेके एक बहुत सुपरफिशियल हमने यहाँ पे चर्चा की है। उन इंडस्ट्रीज पे भी यदि हम केमिकल इंजीनियर्स को बहुत अच्छे से देखेंगे तो बहुत अच्छे से जा पाएंगे कि कहाँ कहाँ पे केमिकल इंजीनियर्स का क्या क्या योगदान है और किस तरीके से वो सोसाइटी को कर रहे हैं। तो हमने कुछ ही इंडस्ट्रीज को यहाँ पर फोकस किया है, बट इसके अलावा और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसपे केमिकल इंजीनियर्स का कंट्रीब्यूशन है और हमेशा रहेगा। सो दैट्स व्हाई थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, स्पेशली इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स को, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिसके तहत हम जो है इस इतने अच्छे टॉपिक पे जो है वो चर्चा कर पाए, डिस्कस कर पाए और हमने अपने नॉलेज जो है वो शेयर किया, अपने व्यूज जो है वो शेयर किया। तो थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। इट वाज जस्ट समथिंग लाइक कि आप सुनते रहिए, बस रुकिए मत। You were speaking and we were just listening, and I was looking to Suresh Gupta sir and Tiwari sir. They were just एकदम लीन हो गए थे, बोले बहुत ही बढ़िया सुनाई दे रहा है करके। नहीं सर, मुझे क्योंकि क्या बहुत वास्ट है सर, ये अपने आप में इतना वास्ट टॉपिक है सर। But still I will say you have done something very big job. आपने बहुत छोटे समय में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया। थैंक यू सर, थैंक यू। Now sir, I am going to summarize today's webinar. Today the topic of our webinar was role of chemical engineering on modern society. In his address, chairman of Bhilai Local Center, Engineer P.K. Tiwari, he gave brief insight about the role of chemical engineering in society, and he focused on the role of chemical engineering especially in health sector and hygiene. And he said it is a very important parameter which not only controls environment but it also affects human life, and not only human life, it has got a great impact on animals too. So then we had with us chairman of Chemical Engineering Division Board, Professor Dr. Shilpa Tripathi Madam. In her address, she portrays that the chemical engineering branch is world's second most demanding branch. Then he said that the effect of chemical begins from the first ray of the sun and it lasts till we sleep. She also discussed about the smart technology, the application of AI, machine learning, IoT, Python in the field of chemical engineering. And she also said that the new composite materials which are being designed today either may be nanotechnology or the bioengineering, or in generalized form we can say whatever technological development today it is taking place, there is a role of 80% in every technological development. There is a role of chemical engineer. Then our first panelist, Engineer Suresh Chand Gupta ji, he began his topic with a word that a person is born means a chemical engineering has begun. The air which he breathes is again a chemical. The water a person drinks is again a chemical. Due to change in environment and other parameter, lifestyle has changed. And there has been a great shift in the regime from wood, coal to petrochemicals and other advancement. We also discussed about the food, the three security area of any nation, which plays a great role in the development of a country. The three sectors were food security, energy security, and health security. And these three parameters
there is a great contribution of chemical engineering. And especially talking about the food security, he rather focused on insecticide, pesticide, herbicides, fungicides, and its application for better yield. He also portrays that whether it is food, water, or war, always there will be a chemical. And he also said that the new hydrogen fuel cell would be a very good replacement for fossil fuels. And to sum up, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, हाँ to हाँ sum up his मास्टर ऑफ सोशल वर्क बोलते हैं, हाँ हाँ. to sum up his presentation, he just gave a brief introduction about the malpractices which is being checked, and he further portrays that every chemical reactions or properties or use, they have got SOP, and whenever there is a violation of this standard operating procedure, always there will be a great hazard to the humanity. He said in a single word that though chemical engineering is a very good servant, but if misused, it could be a very bad master. He also gave the example of war which is going on between Russia and Ukraine. Certainly one could not deny the use of chemical engineering there, but at the same time, the entire humanity is looking after the ceasefire as well as some other things which we are providing. Again, we find the role of chemical engineering there. Then our second panelist was Dr. Shweta Chaubey. In a very short duration of time, she discussed a lot, beginning from George E. Davis, regarded as a father of chemical engineering. And whenever we talk about chemical engineering, the first thing which gets into our brain is textile industry. Dr. Shweta Chaubey madam begin her presentation from the development of threads, organic threads, then looms, and how synthetic fibers replaced the textile industry. And today there has been a 360-degree shift in the phase of textile industry, where today we are proud to have color changing fabric, wearable fabrics embedded with sensors which can sense and monitor our health. Not only they can sense or monitor, they even are equipped to communicate with devices and person also. At the same time, now a time very soon we will be having fabrics which can generate energy. The second topic which she addressed was the role of chemical engineering in agriculture. There has been a great role in the productivity, mainly contributed by the fertilizers. And she also said that there has been a shift in hydroponic cultivation system is there. And she also said that strictly we have to follow the guidelines laid by the government regarding the environment. And when we talk about environment, it is not only air or water. It completely includes the biosphere. Then the role of chemical engineering in health and technology. And finally, she summed up her presentation by saying that though a chemical engineering is not a single word, because it is a only branch of engineering which is multidisciplinary in nature, which as per our new education policy, the government is focusing that every person should learn or have a basic idea about different disciplines so that a useful product can be developed. With this word,
I would like to request the participants or attendees to ask questions, if any. There, I have seen one question or two questions regarding. I would like to ask it to Shweta Chaube, madam. There was a question from one audience that the crops grown from hydroponics, will they be equally good as organic food or not? यस सर, यस, क्योंकि फूड में जो है वो ऑर्गेनिक फूड क्या होता है, देखिए सॉइल में जितनी चीजें अवेलेबल हैं, न्यूट्रिएंट, क्रॉप की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल क्या चाहिए, हमको न्यूट्रिएंट चाहिए। न्यूट्रिएंट यदि अवेलेबल है, वही न्यूट्रिएंट सॉइल में अवेलेबल था, जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, जो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है उसकी ग्रोथ के लिए, तो वहां पर हमने सॉइल में अवेलेबल न्यूट्रिएंट को पानी में अब्सॉर्ब करके पानी में अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट को प्लांट में नहीं खींचा है। यहाँ पर पानी में या एक्वा मटेरियल में वो न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, और वो न्यूट्रिएंट अवेलेबल को जो है वो क्रॉप जो है वो यूज कर ले रहा है, यानी अब्सॉर्ब कर ले रहा है, तो डेफिनेटली वो जो क्रॉप ग्रो होगा वो हेल्दी क्रॉप होगा और पूरे न्यूट्रिएंट के साथ ग्रो होगा, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वो कम ग्रोथ होगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट सर यदि सॉइल में कोई इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी भी तरीके से क्रॉप में यानी मींस कीड़े लगना जिसको कहते हैं, पॉसिबिलिटी सॉइल में फिर भी थोड़ी ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट। यस मैडम, थैंक यू मैडम। देयर वाज वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर भास्कर भंडारकर, and I think it was somewhat related to Dr. Shilpa Tripathi madam, that what is a green audit, and I will request Suresh Chandra Gupta ji or Dr. Shweta Chaube madam, if they would like to reply this question, please. What is green audit? This question was basically asked by Dr. Bhandarkar, and it was related to Dr. Shilpi Tripathi madam. It is not compulsory for us. I have just seen it in a dialog box. So we can skip this, sir. Tiwari sir, shall I? Chaube madam, we can skip this question. Now we are coming towards the end of our today's program. Now I would like to propose a vote of thanks. I, Dr. Nagan Tripathi, on behalf of Institution of Engineers, Bhilai Local Center, take this privilege to propose a vote of thanks. First of all, I am thankful to the Institution of Engineers India for giving us an opportunity to conduct this webinar in national platform. My sincere thanks are due to Dr. Shilpa Tripathi madam, Chairman, Chemical Engineering Division Board, IEI, for giving her valuable presence and her thought about today's webinar issue. My thanks are due to Engineer G. Raghunath, Chairman CATE, IEI, and President of IEI, Dr. H.O. Thackeray. My sincere thanks are due to our panelist, Engineer Suresh Chandra Gupta ji, and Dr. Shweta Chaube madam, for sharing their expertise with us and giving a deep insight about the chemical engineering and the role of chemical engineering in everybody's life. At last, I would like to thank one and all who has directly or indirectly contributed for the success of this program. Thank you very much. And with due permission of Chairman, Engineer P.K. Tiwari sir, I would like to announce the closing of today's webinar. Shall I announce, sir? Okay, thank you. Please. Hereby the webinar is closed. Thank you one and all. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, everybody. Kinsuk sir. Sir. Sir, you can end the program, please. From all the chairs.
conclude the session, sir. Yes, sir. Yes, sir.